get some lost pride back. So that's going to be the main motto for Team Super Kings. It's not been such a good tournament for Super Kings, but yes, they remain one of the most explosive sides in the tournament. So I'm sure that we get to see some good cricket. So forget the statistics, forget the point table. Just sit back and relax. Enjoy this super class game. चलिए दोनों कप्तानों से निवेदन करता हूं कि टॉस के लिए सेंटर पिच पर आए. जयदेव गुप्ता जी है, नितिन सिंगल जी भी मौजूद है. Yes, both the teams in all readiness alongside Mr. Karan Singh Walia. We've got Jaydev Gupta ji and Nitin ji Singhal. We also have our dear friend Vinay Surana. A very important game for Team Warriors. They would definitely be wanting to win this one so that they can get into that top two positions. The top two positions get one extra shot to make it to the grand finale. So from that perspective, definitely Team Warriors will be wanting to win this one. As far as Team Super Kings is concerned, yes, definitely it's unlikely that they will make it to the top four, but they remain to be a champion team. And tonight they will play some good cricket to regain some of their lost pride. Yes, Aryan Patni and Tushar Uchil to step up and exchange their team list. It's going to be Karan Bhai to flip the coin. Yes, both the captains exchanging the squad list. Tushar is going to take the call. Karan Bhai to flip the coin. It's toss time. Heads is the call and it is heads. Tushar. Aryan has won the toss. Aryan, what's your decision? Yes, we're going to field first. We are treating this game as a knockout match because we know how important it is to finish in the top two. And Super Kings is a great team, so we're going to come all guns blazing. Aryan, right through this tournament, जो भी कैप्टन टॉस जीता है, बिना कोई हिचकिचाहट सीधे सीधा गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. सिर्फ गैंगस्टर्स ने कि they were the only team not to field. Well, we fielded the first 6 games, so we're going to go with the flow. If it's working for us, then we want to continue this. And when dew comes into play, so batting gets easier in the second half. That is why. How's the team looking like? We don't have any changes. We're going to go with the winning team. We are with Tushar, the champion captain. Yeah, it's been not such a good tournament, never mind, but still the talent that your team has, I'm sure that you're going to be playing some good cricket tonight to regain some of your pride back. Well, yes, not the kind of tournament that we would have had after what happened last year. But, you know, it's another opportunity for the youngsters, especially to come out here and perform and show their talent. It's a good side. It's just that we haven't been on the right side this time. But against a quality opposition, we'll expect our game to rise and hopefully we can have a good game. So what do you think about Team Warriors? Team Warriors, I think they are a side to beat. I think they've played some fantastic cricket, starting from their captain, who's been in the form of his life, I feel, in this tournament. And they're looking a good side. They have a good captain, and everyone on their day, you know, they are match winners. So it's exciting. You know, they're a quality bunch of cricketers, and hopefully we can have a tough game. Yes, so thank you, and wishing both the captains the very best. We pose for the national anthem. We'll try and get our caps and hats off. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत
सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Bharat Mata Ki. One day. Yes, we pose for the team photograph. Chalo, one with a thumbs up. Ganpati Bappa. Yes, the news from the center. Aryan Patni, the captain of Team Warriors, having won the toss, is elected to field first. It's going to be the batting duo of Team Super Kings to take first guard. Hello. A cheery good evening, ladies and gentlemen, boys and girls. Namaskar, namaste, adab, sat sri akal, vanakkam, kem cho. Yes, this is match number 26, the match between Team Warriors and Team Super Kings. Definitely Team Warriors have made it to the top 4, no doubt about it. But the key thing here for Team
Warriors is to make it to the top two teams so that they get one extra chance to make it to the grand finale. So from that perspective, it's a very important game for Team Warriors. Yes, definitely the champion team, Super Kings, is out of reckoning, but I'm sure that tonight they will try and put their best foot forward, play some excellent cricket to regain their lost pride, try and get some momentum back before that T10 tournament gets on its feet. In spite of the bad tournament that Team Super Kings has had in this GSC 2020, they definitely remain to be one of the teams to watch out for, no doubt about it. So yes, tonight it's going to be the super game, so sit back, do not look at the points table from that spectator points of view, enjoy the good game. Yes, Team Warriors, as Aryan Patni, the captain, having won the toss, decided to bowl first. He's mentioned that he's going to be treating this game as a knockout game because this is a must-win situation for Team Warriors if they have got to make it to the top two teams. So let's see who wins this game tonight. A big thank you to all the viewers connected with us on YouTube. Yes, the viewership graph has been on the rise in this GSC 2020. We would be looking forward to the same support and patronage right through the GSC 2020 event, and 6 more matches to go after this. And then in the month of Jan 2023, from the 5th of Jan, it's going to be the 45 plus tournament, which is one of the biggest advertisements for the 45 plus brand of cricket in the city of Mumbai. That event will be once again followed by this Open T10 tournament. So a fantastic cricket festival on at the Goregaon Sports Club under the lights. Yes, just look at this ground. It's looking like a beautifully decked up maiden, one of the best clubs in the city of Mumbai, one of the best grounds that we have in this part of Mumbai. So it's going to be a great event. Once again, a big thank you to all the viewers connected with the GSC 2020 on the YouTube. Thank you so much. A big thank you to Karan Singh Walia ji, the chairman of the Outdoor Sports Committee, for designing and executing this wonderful event. A big thank you to the groundsmen, the umpires, not to forget the staff members who've done a swell job to make sure that this event is rocking. A big thank you to Pramod Bhai Kashyap and his coverage team for bringing quality live pictures to us. Thank you. We connect with the spectators in the next 7 minutes with live action. Thank you. Like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it rain tonight. We gonna let it rain tonight. We gonna let it rain just like the sunrise. We gonna let it rain. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it
Yes, just to take you through the playing 11 of Team Warriors, Aryan Patni, Saket Adhikari, Abhishek Gosalkar, Avin Patel, Pavan Panara, Sagar Uchil, the wicketkeeper batsman, Parth Shah, Dharmin Parikh, Ravi Sahu, Vikas Goenka, Priyanka Jain, and yes, once again, tonight it's going to be Amarkant Jain to take that responsibility of the 12th man. चलिए सुपर किंग्स के प्लेइंग 11 के साथ आप सभी को रूबरू कराता हूँ। कप्तान तुषार उच्चिल, जुगराज मेहता, स्मित शाह, प्रितपाल सिंह बराज, चिंतन शाह, विकेटकीपर बैट्समैन मोहन मित्तल, मिकी मोदी, भावनीत बर्डी, शुभंकर जोशी, आयुष अग्रवाल, राजीव शाह, and Naman Chawla is gonna be the 12th man tonight. Yes, wishing both the teams the very best. फ्रॉम द स्पेक्टेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू मेरे ख्याल में हम सभी को पॉइंट्स टेबल की तरफ नहीं देखना है आज की शाम. जस्ट सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय अ वंडरफुल गेम ऑफ क्रिकेट. इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट, लेट मी टेल यू दैट. टीम वॉरियर्स को किसी भी हाल में इस मैच को जीतना है ताकि अपना सुनिश्चित स्थान पहले दो टीम्स में बनाए रखे. जो भी टॉप 2 टीम्स होंगे उन्हें एक एक्स्ट्रा मौका मिलेगा ग्रैंड फिनाले में प्रवेश करने का. उस लिहाज से यह मैच बहुत ही ज्यादा मायने रखता है टीम वॉरियर्स के लिए. सुपर किंग्स हालांकि इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, अगर इस मैच को जीतती है तो भी क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, लेकिन इस मैच को किसी भी हाल में जीतना चाहेंगी ताकि थोड़ा सा वो अपना प्राइड रिगेन कर एक थोड़ा सा लॉस्ट मोमेंटम फिर से एक बार उनके पास आए. उनके डायनामिक ओनर जयदेव गुप्ता जी है यहां पर. Yes, a big thank you to the owners of Team Super Kings, Jaydev Gupta, Pritpal Singh Baraj, Mickey Modi and Amardeep Singh Baraj. Team Warriors के ओनर्स नितिन सिंघल एंड ललित बीच, दोनों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. सुपर किंग्स के कप्तान तुषार उच्चिल और वॉरियर्स के कप्तान आर्यन पटनी. चलो, चैलेंजर्स नंबर 1 पोजीशन पे है, राइडर्स नंबर 2, वॉरियर्स नंबर 3, गैंगस्टर्स नंबर 4 और नंबर 5 पर है ब्लास्टर्स. चैलेंजर्स का एक मैच होना बाकी है, 10 पॉइंट्स उनके किटी में है. 3 टीम्स 8 पॉइंट्स पर है. राइडर्स ने अपने सभी राउंड रॉबिन लीग मैचेस खेल लिए हैं. वॉरियर्स और गैंगस्टर्स के लिए एक एक मैच बाकी है. वॉरियर्स आज की शाम अपना आखिरी राउंड रॉबिन लीग मैच खेलेंगे. गैंगस्टर्स का एक मैच बाकी है और ये दोनों ही टीम्स 8-8 पॉइंट पर है. तो अगर आज की शाम वॉरियर्स इस मैच को जीतती है तो
10 पॉइंट्स प्राप्त कर लेगी और सीधे सीधा टॉप 2 पोजीशंस में चली जाएगी। नेट रन रेट ये तय करेगा कि चैलेंजर्स नंबर 1 पर होगी या टीम वॉरियर्स नंबर 1 पर होगी। और फिर गैंगस्टर्स का और एक राउंड रॉबिन लीग मैच होना बाकी है। अगर गैंगस्टर्स अपने उस मैच को जीतती है तो वो भी 10 अंकों तक जा सकती है। तो उस लिहाज से अभी तक फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशंस सुनिश्चित नहीं हो पाए हैं। चैलेंजर्स मेरे ख्याल में इस राउंड रॉबिन लीग फॉर्मेट के बाद या तो नंबर 1 के स्थान पर होगी या तो नंबर 2 के स्थान पर होगी। बहुत ही कम ऐसे आसार है कि टीम चैलेंजर्स नंबर 3 या नंबर 4 पर जाएगी। चांसेस ब्राइट यही है कि टीम चैलेंजर्स शायद राउंड रॉबिन लीग फॉर्मेट के बाद किसी भी हालत में 1 और 2 पे रहेगी। तो 3 टीम्स के बीच में ये लड़ाई होगी। वॉरियर्स, राइडर्स और गैंगस्टर्स के बीच के टॉप 2 में चैलेंजर्स के अलॉन्ग साइड कौन सी वो टीम आए, तो ये एक कश्मकश है। दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट इवेंट टू लुक एट। चलिए, शाश्वत के पास वो ऑरेंज कैप 397 रन्स, उन्होंने 7 मैचेस खेल लिए। अनफॉर्चुनेटली शाश्वत की एवरेज 99.25 पर क्लोज हो चुकी है एंड चार्जर्स विल नॉट मेक इट टू द नॉकआउट स्टेजेस। अगर आर्यन 4 या 5 रन और बना लेता तो इस टूर्नामेंट के दरमियान शाश्वत की रन रेट एवरेज होती 100 रन्स। आर्यन पटनी द कैप्टन ऑफ वॉरियर्स इस वक्त 367 पर है। आखिरी मैच खेलता हुआ आर्यन, अगर आज 31 रन आर्यन बना लेता है तो ऑरेंज कैप उनके मत्थे सच धज कर संवरती नजर आएगी। सागर उच्चिल नंबर 3 पर है, वो भी वॉरियर्स से है। 240 रन बनाए सागर उच्चिल ने, एवरेज 48 की है। 2 50s लगाए हैं शाश्वत ने, 5 50s लगाए। आर्यन पटनी ने 4 50s लगाए। रोहन गज्जर ने 1 सेंचुरी लगाई और 1 50 लगाई है। विक्रम पंजवानी नंबर 5 पर है। यस, दैट अदिति इज विद दैट white new ball. Yes, all set. Yes, she is definitely one of the owners. She loves the game. She's always there to support the GSC cricket event. Umpires, you got to come back. चलिए, पर्पल कैप के लिए सौरभ 7 innings 11 wickets. Saurabh Loya from Riders at the top of the table. Yash Gadia number 2, 7 matches 10 wickets. ठीक है, ये तो बता। राहुल जान नंबर 3 पर पर्पल कैप, मोनिश शाह नंबर 4 पर और वेदांत गाडिया नंबर 5 पर। तो पहले 2 प्लेयर्स पर्पल कैप के लिए जो है वो राइडर्स से है और 3, 4 और 5 के जो गेंदबाज है वो चैलेंजर्स से है। चलिए, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आर्यन पटनी once again at the top of the table, 49.127 points in his kitty. शाश्वत झुंझुनवाला जिनका कैंपेन खत्म हो चुका है एट द नंबर 2 स्पॉट विद 41.345 पॉइंट्स। दक्ष जिनका कैंपेन समाप्त हो चुका है नंबर 3 पर है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर 35.549। यस, यश गाडिया back to back good performances have propelled him into that number 4 position as far as the MVP standings are concerned with 35.355 points. And Vikram Panjwani, the standout player, the owner and captain of Team Challengers, 33.337 points, stands at the number 5 position on the MVP table. Yes, just look at the screen as Aditi is about to give that new white ball away to our umpire Yogesh Kamble. Here we go. There you can see the pretty Aditi on screen. There you go. Thank you, Aditi. She's always smiling. She always wants her team to win, and I'm sure that she is gonna
cheer the team right through this match. Yes, looks like it is Mickey Modi, the man at... you'll have to see whether it's the striker's end or it's the non-striker end, and alongside it is Chintan. The opening duo of Chintan Shah and Mickey Modi at the wicket to open the innings for Team Super Kings. Yes, Team Super Kings, there's always a certain buzz in the air when Team Super Kings steps out to play. Unfortunately, this event has not gone their way, but nothing to take away from the wonderful talent that they have at their disposal. Yes, we've got AD with us. Aditya. Tonight they have nothing to lose here, so I'm sure that there will be no nervous energy in the psyche of the players of Team Super Kings. They will play their natural game. They will enjoy this game. But I'm sure the captain has instructed his players to make sure that they play some fantastic cricket tonight to win this one and regain some of their lost pride back. Yes, Team Warriors, this is going to be a very important night for them. They have to win this one to make it to the top two. Once you make it to the top two, you have that extra chance. You get that extra shot to make it to the grand finale. The first match is going to be between the teams placed at the number 1 position and at the number 2 position. The second match will be between the teams posted at the number 3 and the number 4 positions. The loser of the first match gets to play the winner of the second match. So from that perspective, one extra chance for the first 2 teams. So yes, anybody would be wanting to seal their berth in the first 2 positions, isn't it? Yes, sir. The umpires Akshay Shetty, Yogesh Kamble, and in the hot seat Purandare. You all set? Can we have that countdown going? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's play new. It's playtime. Ravi Narayan Sao from the infinity end. Here we go. Getting some good shape into the wickets. An ideal start, nicely played. A good positive defensive shot. Good meeting of the ball with the blade. That will make him feel good. Warm welcome to Kaushik Bhai Mehta. This is definitely like a virtual semi-final for Team Warriors, and Aryan mentioned at the time of the toss that the team is treating this match as a do-or-die situation, as a knockout match. So yes, they will have to be at the top of the game. I'm sure that they have drawn up plan A, plan B and plan C. They got to approach this match with good positive direction. A headless body will never take you anywhere. You got to have the direction. You got to draw out your plans. This game can be like a game of chess. You got to draw out your best moves in this kind of a situation. Mickey Modi on strike for the first time tonight. Nicely played. Just look at the way Mickey went into that shot. Good timing. Such a good shot to watch. That was just a firm push, but the ball was traveling like a tracer bullet. Good timing from Mickey.
Superbly bowled. That was that swinging delivery. The batsman beaten all ends up, lock, stock and barrel. The length has been immaculate by Ravinarayan Sahu. This has been well thought out. Aryan Patni has asked his bowler to keep the ball further up to the batsman. He's trying to swing the ball. Striking that corridor of uncertainty, is bowling in the right channel. Yes, to negate this kind of good quality swing bowling, you got to be at the top of your technique. You got to have decisive footwork. You cannot be caught in two minds whether to get onto the front foot or on the back foot. This is quality bowling by Ravinarayan Sahu. End of such a good over, 4 runs for the loss of no wickets. I think this is the best over that Ravinarayan Sahu has bowled in this tournament. If you just look at the line and the length and the way he was trying to make that new ball talk, was wonderful. So I think for me, this over was the best over that Ravinarayan Sahu has bowled in this tournament so far. Although he has not picked up any wicket, but he almost asked a question of every delivery with that new ball in the first over. And yes, it's going to be Priyank Jain from the in-orbit end. Yes, he's starting to make a statement for himself in this tournament. The GSC 2020, it has been a good tournament for Priyank Jain. But tonight, he'll have to make a big name for himself. Tonight is the night wherein he's got to be at the top of his game. Both these new ball bowlers need to make this new ball talk. Good length. Yes, so Mickey Modi is trying to get his front foot forward to negate the swing. Yes, that's a good thought to be playing on the front foot to the new ball, because both these bowlers are trying to bowl a fuller length. When you bowl a fuller length, it gives you that extra chance for the ball to swing. So far, not a single length delivery, not a single bang-in delivery. They are trying to keep this new ball up to the batsman. Chintan, the man on strike. What a shot there. Just look at that pickup shot. That's a Parik Group 6. Goodness me, what a shot. Extraordinary shot so early in the innings. Making his intentions clear here, Chintan. He is a fantastic talent. He needs to come good. This season, he's got to make a mark for himself. He's too good a player not to be in the reckoning amongst the top 15 players at the GSC. We already have the fabulous 7. Yes, so we are trying to look at the players who can occupy the spots from the number 8 to the number 15 position. Such a fine wicketkeeper batsman, great temperament. He is a flamboyant player, isn't he? But yes, we are waiting for that one big knock from the blade of Chintan. Yes, definitely making his intentions clear. Yes, the ball is back. That was into the rooftop of the Goregaon Sports Club. Almost went into the swimming pool for a swim. Priyank from the in-orbit end. Just giving it the direction. This is a yes and no, yes and no.
Unfortunately, no harm done. Fortunately for Super Kings, back home safely, Mickey Modi. Let's just sit back and enjoy this wonderful game of cricket. Well timed, superbly timed into the gap. That's a dot shot boundary. Even Mickey Modi now joining the party, not the one to be left behind. Just like his persona, Mickey Modi is a flamboyant player. Yeah, this is not bad bowling, but it is more of the batsman showing some aggressive intent, good batsmanship. A man posted in the deep, that was a good square drive all along the ground. A 17 for the loss of no wickets, off to a great start here, team Super Kings. A big thank you to our sponsors, Parik Group, Sejal Realty, Hex Shakti Corporation. Much better. Coming in round the wicket, slightly short in length, coming into the batsman, into the stumps. End of an expensive over that has gone for 14 runs, that over from Priyank. Chalo, let me get the Mumbai Ranji Trophy squad in front of you. The Mumbai Ranji Trophy squad, Ajinkya Rahane, the captain, Prithvi Shaw, Yashasvi Jaiswal is in the form of his life, Arman Jafar, the nephew of Wasim Jafar, Sarfraz Khan, the son of Naushad Khan, Suved Parker, Hardik Tamore, Prasad Power, Shams Mulani in extraordinary form in the last 2 seasons. Tanush Kotian, Tushar Deshpande, Mohit Avasti from Borivali, Siddharth Raut, Royston Dice, Suryansh Shedge, Sashank Tatarde and Mushir Khan, once again the son of Naushad Khan. So 2 brothers playing in the Mumbai squad, Mushir Khan and Sarfraz Khan. One has already played the IPL and he is in great form. So yes, this is the Mumbai squad for the Ranji Trophy. Mohit Avasti is a medium pace bowler from the suburbs, from North Mumbai, from Borivali. Yes, even Suved. So that's the Mumbai squad for you. I think this is a change in end for Ravi Narayan Sahu. Maybe Ravi Narayan Sahu will be brought from the other end. It's going to be the captain Aryan who brings himself on to bowl from this infinity. And yes, the most valuable player in the tournament with a tally of 41.34 points. The number 1 player on the MVP standings. Here we go. Deft touch, thoda sa nazakat se khela. He's got that man in the short third man area. What a player Aryan is. Superb. Quite short on that occasion. Nobody on the leg side in that single saving position. Both the man outside the inside circle, the 30-yard circle. Yes, for Mickey Modi, they get one man into that single saving position inside the circle. He loves to play the cover drives. That is one of his favorite shots, Mickey Modi. Yeah, he's promoted himself up the order tonight.
There was a chance in it, a half chance maybe. Managing to take that outside edge off the blade of Mickey Modi. Difficult chance, but yes, you got to note it down as a dropped opportunity. Nicely bowled, much better, yes. This is a probing line and length. 2 balls to go in this over from Aryan, the man on strike, the wicketkeeper batsman for Super Kings, Chintan. The wicketkeeper batsman for Super Kings is Mohan Mittal. Chintan is indeed such a good prospect. That was off the inner edge. You'll have to wait and watch. He had a shy at the non-strikers, and Aryan Patni wasn't in such a good position to collect that throw. Aryan should have got into a good position straight away. End of the over. They do not want to lose a wicket to a run out, isn't it? Especially in this kind of a match wherein they have nothing to lose. There's no need to take that risky run, isn't it? Both these batsmen are looking to play positively. Both the batters have already hit a couple of boundaries. So there's no need to take that single. Yes, as I had predicted, it's going to be Ravi Narayan Sahu to bowl from the in-orbit end. The first over that he bowled was absolutely spot on. That was brilliant bowling. One of the better bowlers that Ravi Narayan Sahu has bowled in this tournament. A change in end remains to be seen whether he can keep up the good work from the other end. Yes, a length delivery coming into the batsman, nicely putting back to ball. Pawan Panara in that single saving position at that short point area. That was intentional. That was a smart shot. The way Mickey Modi opened the face of the bat at the very last moment with a still head. Mind you, his head was so still at the time of executing that shot. So nicely done. Playing with soft hands so that the ball goes into the ground. Whenever you want the ball to go down and not pop up, you got to play with soft hands, isn't it? Nicely done by Mickey. Yes, in the meantime, a warm welcome to my dear friend Jeevan Bhai Rai. A warm welcome to Prasad Bhai Karkera as well. Into the gap, that will be a dot shot boundary. That is the shot that Chintan wants to play always. That is one of his pet shots. I would also like to welcome Pramod Bhai Gupta, sorry. Warm welcome to Vikram Panjwani. He's at the number 5 spot as far as the orange, the most valuable player standings are concerned. I think it's going to be a fight between Aryan Patni, Yash and Vikram Panjwani in this tournament now for the MVP. Yeah, this is the vintage Ravi Narayan Sahu. This is why he is in the team. He's expected to bowl this way with the new ball. This is his primary job, to bowl those first 3 overs superbly with the new ball.
Well ball. This is indeed such a good display by Ravi Narayan Sau. As I had mentioned earlier, that he is looked good tonight, and that first over that he bowled was such a good over. He straight away struck a wonderful rhythm, bowling in the right areas, probing line and length, asking questions with every delivery with that new ball. Both these batsmen living dangerously, a bit of misunderstanding, and not in proper sync with their calling. Yeah, because it is very rare that both these batters go out to bat together. So it's going to be a slight challenge for that proper calling to happen. A big thank you to Parik Group for having sponsored the Sixers, Sejal Realty, Hex, Shakti Corporation, Edelweiss, Dot Shot for having sponsored the boundaries, Jensen LED Lights for sponsoring the DRS and the wickets, Zig Sports Studio for providing the man of the match discount vouchers, Gajjar Group and Body First. A big thank you to all our sponsors on behalf of Karan Singh Walia and his Outdoor Sports Committee. Looking forward to the same kind of support and patronage in all the future events at the GSC, all the outdoor events. Aryan Patni to continue. It's going to be Chintan on strike. The scoreline at the end of 4 overs is such a decent start here, 26 for no loss. Playing it slightly late. He was late on the ball, and that is why the ball got that inside edge. सत्ताईस रन बिना कोई नुकसान के एक अच्छी नींव रखते हुए ये दोनों ही बल्लेबाज अच्छी गेंद, एक अच्छी शुरुआत हुई है सुपर किंग्स के लिए। अब तक इस इनिंग्स में काफी अच्छा मिजाज नजर आया है दोनों ही बल्लेबाजों का, खुलकर खेलते हुए सकारात्मक अंदाज में अपनी इस इनिंग्स को मार्ग प्रशस्त करते हुए। बेहतरीन टाइमिंग और ये पारी ग्रुप छक्का, बढ़िया शॉट। मिकी मोदी अपना आक्रामक रंग पेश करते हुए, क्या बात है। मैंने पहले बताया कि आज किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है सुपर किंग्स के लिए, देव नथिंग टू लूज, तो बिल्कुल खुलकर खेलेंगे, अपना आक्रामक रंग पेश करेंगे और मिकी मोदी यही दर्शाते हुए
एज अ स्पेक्टेटर केवल यही कहूंगा कि पॉइंट्स टेबल की तरफ आपको देखना ही नहीं है. जस्ट सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय दिस सुपर गेम. कॉफी नहीं है, थोड़ी देर के नहीं अभी लाओ. चाचा कॉफी लेके आओ ना. देखो क्या चाहिए. नहीं मेल नहीं, तू कॉफी पी. बहुत ही पैशनेट क्रिकेटर है मिकी मोदी, हम सभी जानते हैं. और बहुत ही एक आधार स्तंभ अपनी टीम का बतौर ओनर. पूरी तरह से जयदेव गुप्ता जी के साथ प्रीतपाल सिंह बराज हो, मिकी भाई मोदी हो, अमरदीप भाई हो, ये सभी मिलकर एक दबंगाई के साथ अपनी टीम को फॉर्म करते आगे बढ़ाते हैं. हम सभी जानते हैं कि जयदेव भाई गुप्ता एक फ्लैम्बॉयंट पर्सनालिटी है और वो इसी तरह का क्रिकेट की अपेक्षा भी रखते हैं अपने प्लेयर्स की तरफ से. दुर्भाग्यवश ये टूर्नामेंट इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन कोई बात नहीं. सुपर किंग्स एक बहुत ही उम्दा टीम है. और नजाकत से खेला है, हल्के हाथों से खेला है, एन वक्त पर कलाई के सहारे मोड़ दिया. 2 रन्स प्राप्त हुए. काफी सूझबूझ के साथ अपनी इनिंग्स को आगे बढ़ाते हुए मिकी मोदी सेट हो चुके और अब एक मेरे ख्याल से एक बड़ी इनिंग्स खेलने की फिराक में नजर आते हुए अब सेट हो चुके. अपनी विकेट को बनाए रखना होगा, एक लंबी इनिंग्स खेलनी होगी मिकी मोदी ने. This is a big occasion for him. He can come up with an innings of 50 plus tonight. चलिए, हमने जयदेव गुप्ता जी की बात की. दूसरी तरफ हम नितिन सिंगल जी की बात करेंगे. वो भी एक बहुत ही उम्दा ओनर है एंड बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट करते, लेकिन उनका काम करने का ढंग थोड़ा सा अलग है. He's not so expressive, but he knows how to extract that team effort from his team. So 2 different personalities in the form of Jaydev Gupta and Nitin Singhal, but both are very effective. Silently he goes about his business, Nitin Singhal and Lalit Vij. But yes, they provide all the support, more than 100% support all these owners provide to their team members. It's a big family out here. Yes, it's going to be Parth. No, माफ कीजिएगा. Yes, it is Parth. He already has a man of the match award in his kitty, which he dedicated to his dad, Paraksha. Parth is a great talent. He needs to be a little more consistent. चेस लगाया और डाइव मारनी थी. अगर रवि नारायण साहू को इस तरह का मौका मिलता एक 7-8 साल पहले तो शायद छलांग लगाई होती, बॉल को रोका होता. डॉट शॉट चौका. पार्थ अच्छा टैलेंट है, लेकिन अगर थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत करे अपनी फिटनेस पर, थोड़ा सा वेट लूज करना होगा, थोड़ी सी और कंसिस्टेंसी लानी होगी. बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्ट है, गुड हेड ओवर हिज शोल्डर्स. थोड़ी और ज्यादा मेहनत करनी होगी. यस, टोटल टीम मैन और 100% देते हैं. Yes, to my right is the young scorer Abdul, with this manual scoring to my left. Akash Singh, the digital scorer. They make my job so easy, both these guys.
Spot on, thorough professionals, both these guys, Akash Singh and Abdul. Great youngsters to have alongside me here in the com box. And of course, Jaunty Singh is always there to keep a watch on everything. Yes, to the credit of both Abdul and Akash Singh, they never commit a mistake. Hardly have I ever seen them committing a mistake. I might have faltered at times with the names, but they never make an error. Both these guys, they are superb. Yes, well done, guys. Yes, स्कोरिंग में भी ये कितनी बड़ी प्रोफेशनल करियर हो सकती है. So many doors have opened. A dietitian, as a mentalist, as a specialist, a pace bowling coach, fielding coach, साइड आर्म थ्रोड के लिए भी कितनी बड़ी करियर है. अब तो जो भी आप क्रिकेट फील्ड पे करो, शिद्दत से करो. यू हैव टू बी बेस्ट एट व्हाट यू डू, चाहे फिर वो क्यों स्कोरिंग ही क्यों ना हो. It's a big industry and it's growing like anything. Sports industry is gonna pay you huge dividends in the next 4-5 years. India is gonna become the sports hub. आप सोचे कि हमारे यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने बिल्कुल ये ऐलान किया है कि भारत देश 2034 के ओलंपिक्स को भारत में लाना चाहती है और उस दिशा में ठोस कदम उठा लिए है. अब तक सुपर किंग्स ने रनिंग बिटवीन द विकेट्स को छोड़कर सभी कुछ शानदार तरीके से किया है. सभी कुछ बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत ही पुअर रही है. ये कम से कम तीसरी या चौथी बार है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है. दोनों ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है. विशेष रूप में मिकी मोदी हैज बीन सो रिफ्रेशिंग इन हिज अप्रोच टुनाइट. 46 for no loss. Off to a great start. The foundation is laid here for a big score tonight. Right up there in the block hole. Well bowled by Parth. And yes, with champion players like Tushar Uchil, Jugraj still waiting in the wings. Yes, this could be a big score on the board tonight. Well flighted, slower through the air. End of the power play period. Good decent start. All wickets in hand. 47. 7.83 that run rate. Challengers at the number 1 position. Riders number 2. Warriors number 3. Gangsters number 4. And Blasters number 5. चले जो भी कुछ होगा अब ये 5 टीम्स के बीच होगा. चार्जर्स, सुपर किंग्स एंड ग्लैडिएटर्स. मेरे ख्याल से अब आगे जो भी कुछ हो, लेकिन इन 3 टीमों के लिए शायद इस गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब 2020 इवेंट में उनका सफर समाप्त हो चुका है. हालांकि आखिरी ग्रैंड फिनाले तक हम चाहेंगे कि हमारे साथ जुड़े रहे, पूरी तरह से सपोर्ट करें इस इवेंट को. लेकिन क्रिकेटिंग पहलू के नजरिए से उनके लिए सफर समाप्त हो चुका है. ब्लास्टर्स के पास एक आउटसाइड चांस है. अगर बेहतरीन क्रिकेट खेल लेती है टीम ब्लास्टर्स तो अब भी मौका है. 90% ये तय हो चुका है कि चाहे अब आगे जाके कुछ भी हो, चैलेंजर शायद फर्स्ट या सेकेंड पोजीशन पर ही रहेगी. शायद 90% चांस है. 10% चांस ये है कि टीम चैलेंजर्स शायद नंबर 3 पर आए. बहुत ही कम आसार है. तो फर्स्ट 2 पोजीशंस में अब हम ऐसा पकड़कर चल सकते हैं कि चैलेंजर्स तो होगी ही. तो 3 टीमों के बीच अब ये लड़ाई है राइडर्स, वॉरियर्स और गैंगस्टर्स के बीच के कौन सी वो टीम बनती है जो टॉप 2 में आएगी चैलेंजर्स के साथ. लेकिन फिर से एक बार दोहराऊंगा, ऑल द कैलकुलेशंस यू हैव टू डू फॉर योर ओन सेल्फ. वी विल गो बाय द ऐप. वी हैव बर्न्ट आवर फिंगर्स द लास्ट सीजन. इस साल ये गलती नहीं करेंगे. सो प्लीज मेक योर ओन कैलकुलेशंस because this can be dicey. So go by the app. Dharmin Parik urf Baba.
एक एक्स्ट्रा रन मिला वहां पर ओवर थ्रो के रूप में। उनचास रन। मिकी मोदी ने 18 गेंदों का सामना करते हुए एक चौके और एक छक्के के साथ 23 रन बटोरे हैं। बढ़िया फील्डिंग देखिए। चले फिजियो, अरे ही माइट बी इन अ डिस्कंफर्ट, थोड़ा सा शायद समथिंग टू वरी मे बी। जैसे जीएससी की पूरी टीम हमेशा की तरह देखे सभी लोग ग्राउंड पर, क्योंकि शायद बॉडी लैंग्वेज सजेस्ट ऐसा हुआ कि शायद कुछ इश्यू हो सकता है। चलिए वी वॉचिंग द रिप्ले, हम रिप्ले में देख रहे क्या हुआ। आई थिंक घुटने पे लगा शायद ना, दैट कुड बी, दैट नॉक ऑन द नी कुड बी सीरियस मे बी थोड़ा सा। सीनियर प्लेयर है, every senior player 45 plus who is almost 50 plus, so he's carrying some niggle or the other. काफी पुर्जे ठीक 100% नहीं है, इसके बावजूद क्रिकेट खेल रहे वो पैशन। यस, बाबा के बारे में कहूंगा कि इट्स अ ग्रेट थिंग दैट ही हैज बीन सिलेक्टेड इन दिस GSC 2020 is a testimony to his experience and his class. The fact that he's been selected and is playing this tournament as one of the prime off spinners, this is a great thing for Baba and is ये दर्शाता है कि बाबा कितने शानदार प्लेयर है। गुड इवनिंग गौरव भाई। Yes, a warm welcome to Vipul Kalyani. सभी ग्राउंड्समैन का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, मोती भाई और उनकी पूरी टीम का। लगातार सीजन आफ्टर सीजन, मैच आफ्टर मैच हमें कितनी अच्छी विकेट्स आप देते हो, तो आपकी मेहनत रंग लाती है। और क्योंकि आप इतनी अच्छी विकेट्स बनाते हो तब जाके अच्छा क्रिकेट देखने को मिलता है। बहुत ही ज्यादा निर्भर होता है एक इवेंट को सफल बनने के लिए कि विकेट किस तरह की है। अगर विकेट अच्छी होगी तो ही अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा, ये बिल्कुल एक सच्चाई है। 100% ये बात बिल्कुल सही है कि अगर अच्छी विकेट होगी तो ही अच्छा क्रिकेट नजर आएगा। तो उस लिहाज से सभी ग्राउंड्समैन के लिए वाकई में बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे अंपायर्स के पूरे पैनल का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, काफी अच्छी अंपायरिंग हुई है। लंबा टूर्नामेंट, एक दो बार ऐसा होगा कि प्लेयर्स कभी खुश नहीं हुए हैं। इट्स अ थैंकलेस जॉब, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। इंटरनेशनल लेवल पे भी हम देखते हैं कि पूरी तरह से हम एज अंपायर्स किसी को हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते, बट यस यू ऑल हैव डन अ गुड जॉब, नो डाउट अबाउट इट। चाहे फिर वो किरण पुरंदेरे हो, योगेश कामले हो, प्रथमेश आंगने हो, प्रशांत दुबे हो, फिर ये जो नए एडिशन हुआ अक्षय शेट्टी हो, और उसके पहले कौन से थर्ड अंपायर थे रेगुलर आते थे वो शुरुआत में, अभिषेक वेद पाठक। ये 6 अंपायर्स ने लगातार अंपायरिंग की है। बाबा इज बैक। रूम दिया, प्लेस नहीं कर पाए। इंटेंशन तो सही था,
50 runs up on the board for team Super Kings. All wickets in hand. एक अच्छी नींव रखी है. देखना है कि इस अच्छी शुरुआत का किस तरह से एक बेहतरीन लक्ष्य में तब्दीली होती है टीम सुपर किंग्स के लिए. आप 180 तो बिल्कुल जहन में होगा, शायद 200 की तरफ भी मन बनाया होगा तुषार उचिल ने. देखिए फ्लाइट में चकमा दिया, थोड़ा सा प्री मेडिटेटेड शॉट. यही गलती रोकनी है. प्री मेडिटेटेड शॉट खेलना यानी कि खतरे से खाली नहीं है, खतरे को न्योता देने जैसा है. हवा यात्रा पर गए निकली है और ये बहुत ही शानदार कैच लिया है. जेनसन एलईडी लाइट्स विकेट गिरा है. आज की शाम का पहला विकेट और सटीक कैच लिया वहां पर साकेत अधिकारी ने. जिस विकेट की खोज में थे अभिषेक घोसालकर ने वो कैच लिया है. Nice catch. Wasn't such an easy catch. He made it look easy, mind you, because he judged the catch to a nicety. And in comes Chintan. It is Jugraj Mehta. हम सभी जानते हैं कि जुगराज इस जीएससी का एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है, एक मैच विनर है. एक अच्छी शुरुआत हुई है. देखना है कि इस अच्छी अनुकूल स्थिति में अब किस तरह से अपनी इनिंग्स को आगे बढ़ाता है, किस तरह से टीम सुपर किंग्स की इनिंग्स को सही मायनों में मार्ग प्रशस्त करते हैं ये दोनों ही बल्लेबाज, मिकी मोदी और जुगराज मेहता. बहुत ही जबरदस्त इवेंट रहा है और पूरी तरह से करण सिंह वालिया जी और उनकी पूरी टीम खुश होगी जिस तरह का नजारा पेश हुआ है. कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल. आखिरी दिन तक शायद ये पॉइंट्स टेबल के 4 टीम्स सुनिश्चित नहीं होगी और ये क्रिकेट के लिए अच्छा है. जिस विकेट की खोज में थे उस विकेट को हासिल कराया बाबा ने. फ्लाइट में चकमा दिया, एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया. गेंद हवा यात्रा पर निकली और अभिषेक घोसालकर ने एक बहुत ही अच्छा कैच लिया. लो फुल टॉस को डिपिश एक्स्ट्रा कवर के रीजन में ड्राइव किया जुगराज ने. ऑफ द मार्क 7 ओवर के बाद 51 रन, 1 विकेट के नुकसान पर. इस बीच हमारे सीनियर मेंबर सतीश अग्रवाल सर का मैं स्वागत करता हूं. गुड इवनिंग सर. आज कुलदीप सर अभी तक नहीं आए हैं. इस हमारे फिजियो का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं. जो भी अपकमिंग फिजियोज है उन्हें उनके लिए भी कितना बड़ा करियर ऑप्शन है. स्पोर्ट्स इतना आगे बढ़ चुका है. आप आईपीएल ले लीजिए, आप प्रो कबड्डी लीग ले लीजिए, खो खो लीग ले लीजिए. अब आने वाले दिनों में अब दहीहंडी प्रो लीग भी होने वाली है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा आयोजित होने वाली है. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने यह ऐलान किया है कि आने वाले दिनों में प्रो दहीहंडी लीग होगी और इन सभी दहीहंडी के बाल गोपालों के लिए भी 5% जो स्पोर्ट्स कोटा रिजर्व किया गया है जॉब्स के लिए, उस कोटा के लिए भी स्पोर्ट्समैन ये दहीहंडी प्रो लीग के प्लेयर्स एलिजिबल होंगे. तो फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी एक बहुत ही बड़ा ऑप्शन है अब
Sports medicine is a vast field. Fifth of Jan से 2023. Superb shot. क्या perfect inside out shot. Dot shot boundary. He made it look so easy. बिल्कुल effortless. जोगराज की रेंज में वो गेंद थी, थोड़ा सा रुक कर खेला, परफेक्ट कनेक्ट किया. 5th of January 2023 से 45 प्लस क्रिकेट लीग यहां पर शुरू होगी. सो ब्लॉक योर डेट्स. वो इवेंट भी एक बेहतरीन इवेंट होगा. सभी लोग रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं. सभी 45 प्लेयर्स एवरी डे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, एक डेढ़ दो घंटा ये सभी प्लेयर्स नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिटनेस पर काम कर रहे हैं. Down the leg side, that came in with the arm. That ball did not turn at all. एक बेंचमार्क सेट किया है तो काफी क्रिकेटिंग स्टैंडर्ड हाई नजर आएगा. 45 प्लस में भी जबरदस्त कंपटीशन. That was off the bat. There was a bat in it, yes. '57. Mickey Modi onto 24, having a look at the field set for him. Good sensible cricket, working the ball away, putting it into the gap, playing with soft hands. This is the way to go about. This is the way how you build your innings after a good start. जो मिडल ओवर्स में जो आप किस तरह से बल्लेबाजी करते हो वो बहुत ही ज्यादा मायने रखता है. पावर प्ले का तो आपने सटीक इस्तेमाल किया है. किस तरह से आप मिडल ओवर्स को खेलते हो T20 फॉर्मेट में, ये मैच का रुख तय करती है. Well bowled. Straight to Priyank. Just a single headed, 2 more balls to go. 59 for 1 it is. Warm welcome to Avinash Mainkar. That really kicked off the surface. Gained the turn bhi hubi or rise bhi hubi. लगातार 75 दिनों का नाइट क्रिकेट मेंबर्स के लिए, यानी मेरे ख्याल से ये तो केवल सिर्फ गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में ही हो सकता है. इस बात को तो बिल्कुल मान के चलिए कि मुंबई में कोई ऐसा क्लब नहीं है जो अपने मेंबर्स को 4 महीनों में 75 डेज का नाइट क्रिकेट खेलने का मौका दे. ये बहुत ही बड़ी बात है और काफी श्रेय जाएगा करण सिंह वालिया जी और उनकी टीम को. बहुत सारे बड़े इवेंट्स यहां पर होने वाले आने वाले कुछ दिनों में. सो इस पूरी तरह से द गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब इज गोइंग टू बी रॉकिंग. ये सीजन खुल चुका है 2 साल के बाद. फिर से एक बार एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल. नॉट जस्ट स्पोर्ट्स बट ऑल दी आउटडोर एक्टिविटीज फिर से एक बार खुलकर पेश होती हुई. Yes, थोड़ा सा umpires you got to keep eye on the watch. कभी कभी you have to take that lead in making sure that there is no time lost.
You got to be slightly proactive. Yes, Team Warriors has played such great cricket under the leadership of Aryan Patni. Yes, and I'm sure that a lot of credit needs to be given to both the owners, Nitin Bhai Singhal and Lalit Bhai Vij. ये तब होता है जब एक बहुत ही सकारात्मक एम्बियंस आप दे आपके प्लेयर्स को, एक अच्छा एनवायरनमेंट दे. बहुत ही जरूरी है कि बतौर ओनर्स आप फ्रीडम दे आपके प्लेयर्स को, उनका हौसला अफजाई हर वक्त करे. चाहे एक आधा मैच हारे, उसके बावजूद आपको पॉजिटिव एनर्जी रखनी है कैंप में, तो ये रोल निभाते हैं बखूबी हमारे ओनर्स. नितिन सिंघल जी और ललित जी बीज काफी हद तक बहुत ही ज्यादा सफल रहे हैं इस बात को लेकर, और टीम वॉरियर्स डेफिनेटली इज वन ऑफ द स्टैंड आउट टीम्स इन दिस टूर्नामेंट. Off the leading edge, that moral victory for Baba, but T20 फॉर्मेट में बहुत ही कम मर्तबा हम किसी को फर्स्ट स्लिप में देखते, स्पेशली 6, 7, 8 ओवर्स के बाद. पावर प्ले में कभी कभी फर्स्ट स्लिप में वो फील्डर नजर आता है. अच्छी गेंद बाबा की. दरमीन पारिक. अच्छी टाइमिंग, गैप में खेला, अपने लिए रूम बनाया, थोड़ा सा बाहर निकले थे. अच्छी फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग. प्रियांक जैन उस डीप मिड ऑफ पोजीशन पर केवल एक ही रन से समाधान हासिल हुआ. 63 रन एक विकेट के नुकसान पर. और एक विकेट गिरा. जेनसन एलईडी लाइट्स विकेट. अच्छा कैच लिया प्रियांक ने. प्रियांक हैज बीन केप्ट एक्टिव. जुगराज बैक इन द हट. नॉट सच गुड टाइमिंग. इस बीच रोहन शाह का भी हम स्वागत करेंगे. बहुत ही अच्छे प्लेयर रोहन शाह. इज वन ऑफ द की प्लेयर्स फॉर चैलेंजर्स. रोहन शाह. Jugraj back in the hut. Jugraj has also some thinking to do here. He's not been in that deadly form. This is the start of the season. A lot of matches to be played, not just this events, but also for the Goregaon Sports Club. And he will be part of quite a few cricket tournaments in Mumbai. So he's got to be in good form. No aspiring player, no up and coming player can afford this season to be lost. You have to make the best of this season. पैंडेमिक के वजह से मैं आपको क्या बताऊं, कितने प्लेयर्स की करियर बिल्कुल नेस्त नाबूद हुई बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक. वो जो अंडर 14, अंडर 16 के प्लेयर्स थे, वो अपना ग्रेड ऑफ क्रिकेट 2 साल तक खेल ही नहीं सके, प्रैक्टिस ही नहीं कर सके, और अब वो सीधा 16 प्लस चले गए हैं. 19 वाले 23 के ग्रुप में चले गए. तो क्वाइट अ फ्यू करियर्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड इन द पैंडेमिक. तो जो भी सीजन जब कभी आपको मिले, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. बहुत ही कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है. आप सभी जानते हैं कि मुंबई शहर में कितना टैलेंट है. सिर्फ 16 प्लेयर ही खेल सकेंगे मुंबई के लिए. एमपीएल के लिए सिर्फ 40 या 50 प्लेयर्स ही खेल पाएंगे.
बहुत ही जबरदस्त कंपटीशन है। ए डिवीजन खेलना है। अगर आपकी कॉलेज के लिए आप खेलते हो तो आपको यूनिवर्सिटी खेलना है, कॉलेज के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस करना है। यू हैव टू ट्राई एंड गेट इनटू दैट ए एंड बी डिवीजन क्लब। गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब इज ऑलरेडी इनटू द बी डिवीजन। दैट इज सच अ ब्लेसिंग हियर। स्कूल लेवल खेलो, कॉलेज खेलो, यूनिवर्सिटी खेलो, ए बी डिवीजन खेलो, ट्राई एंड प्ले फॉर द मुंबई टीम। ये एक पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। हैरिस शील्ड के लिए, गाइल शील्ड के लिए सबसे पहले तो एक अच्छी एकेडमी ज्वाइन कीजिए, उसके बाद एक अच्छे कॉलेज का चयन करें। अब तो बॉयज भी पेरेंट्स स्कूल ऐसी सिलेक्ट करते हैं जिसमें अच्छा क्रिकेट है। एजुकेशन को न देखते हुए, क्रिकेट को सिर्फ देखते हुए अब पेरेंट्स स्कूल्स का चयन करते हैं। तो आप एक अच्छी, जैसे ही आप 8, 9, 10 साल के होते हैं तो एक अच्छी स्कूल आप चयन करें हैरिस शील्ड के लिए, गाइल शील्ड के लिए, फिर ऐसी कॉलेज में एडमिशन ले जहां पर क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। इट्स गोइंग टू बी ड्रिंक्स आफ्टर दिस। ट्राई एंड प्ले फॉर द यूनिवर्सिटी। कांगा लीग के लिए ए डिवीजन, बी डिवीजन के क्लब्स में खेलो। पुरुषोत्तम है, तालीम शील्ड है, कुर्ला बापट है, गोरधनदास है, इस तरह के ओपन टूर्नामेंट्स है। पुलिस शील्ड है, इस टूर्नामेंट्स खेले। एमपीएल के लिए खेलना बहुत ही जरूरी है। आप एमपीएल में परफॉर्म करोगे तो फिर आप यू स्टार्ट टू गेट नोटिस्ड। फिर मुंबई अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 25, ये सब प्रोफेशनल क्रिकेट का ये सेटअप है। जैसे कि मैंने 7.5 मिनट आगे के पहले कुलदीप पाजी सर को याद किया था, 7.5 मिनट्स बैक, एंड ही इज हियर। चले अब गेंदबाजी का बाहर संभाली हुए आर्यन पटनी इन ऑर्बिटेंट की तरफ से 65 फॉर 2। 9 ओवर के बाद ड्रिंक्स इंटरवल के पहले का ये आखिरी ओवर। ये आर्यन पटनी की स्टॉक डिलीवरी है। 6 में से कम 3-4 गेंद यही गेंद होगी। बहुत ही ज्यादा शॉट, काफी शॉर्ट गेंद थी और इस तरह की गेंदों को रोकना होगा आर्यन ने। 6 में से 6 गेंद सटीक होनी चाहिए। बेटा, मच बेटर। वाइड का इशारा दिया है। Yes, for somebody like Aryan who does always set such high standards, such a high benchmark, he has to bowl at least 5 top class deliveries out of 6, at least 5. आपको अगर मुंबई शहर का जो बेस्ट ग्रेड ऑफ क्रिकेट खेलना है तो यू हैव टू कीप इंप्रूविंग मैच आफ्टर मैच। एवरी डे एज अ क्रिकेटर यू हैव टू ग्रो, एवरी डे एज अ क्रिकेटर। एक समय ऐसा आना चाहिए कि 6 में 6 गेंद बिल्कुल एक ही जगह पर आप डालो। और जब आप ग्रो कर रहे हो एज ए क्रिकेटर्स, एटलीस्ट 4 to 5 डिलीवरीज यू हैव टू बी राइट ऑन द मनी। चले गैप में वो गेंद गई है और अच्छा फुटवर्क, स्मार्ट वर्क, अच्छा बैकअप भी किया रवि नारायण साहू ने। ये देखे किस तरह से दोनों फील्डर्स कंबाइन हुए और अपनी टीम के लिए 2 रन्स रोके। मैंने मुंबई स्क्वाड का लिस्ट आपके सामने रखा। अगले साल या तो नए साल में 2023 में हम 1 या 2 प्लेयर्स हमारे इस स्क्वाड में बिल्कुल देखना चाहेंगे। Yes, I would also like to welcome Mr. Nikhil Patel.
Such a good flow off the bat. Just look at it for pure timing and contact. Mickey Modi into his elements. That's a dot shot boundary. It is drinks time, 72 for 2. The match even Stevens at this stage. Good decent run rate, but two men back in the hut in the form of Jugaraj and Chintan. It's drinks time. Can Super Kings post another 110 to 120 runs in the final 10 overs? They would be looking to put up at least another 100 runs, isn't it? At least 175 is what they would be looking at after this kind of a decent start. And yes, if this team has to go past that 170 run mark, it's gonna have to be one of these two batters to play a huge innings, and Tushar Uchil will really be the man to watch out for. If he gets going, if he comes into his own, then this ground would be too small and that 180 will really look to be possible. Mickey Modi is playing a good knock, a useful contribution. He needs to continue in the same vein. He's got to recollect his focus. He's got to reorient himself in this break and take a fresh guard and start absolutely fresh after this break. Take a new guard. Just treat every delivery as your first and last delivery. बल्लेबाज आने बाकी सुपर किंग्स के लिए स्मित शाह, प्रीतपाल सिंह बराज, मोहन मित्तल, मावनीत बर्डी, शुभंकर जोशी, आयुष अग्रवाल. Baba to Tushar. मेरे लेफ्ट साइड पे जो नितिन सिंगल जी के साथ जो प्लेयर्स खड़े, प्लीज आप बाउंड्री लाइन से थोड़ा सा दूर खड़े रहना. नितिन जी प्लीज स्लाइटली. द प्लेयर्स, यस, थोड़ा पीछे आइए प्लीज. हेमंत मोहिते जी, थैंक यू, थैंक यू. That was a slightly loose delivery. Unfortunately, straight one bounce into the hands of the man in the deep. Just a single added takes the score to 74 for 2.
Handsomely driven into the gap. Puppy soft misfielding by Priyank. Dot shot boundary. Yes, Mickey Modi is making a big statement tonight. He's showing his class. He's showing his potential. यही तो होता है ना, when you get an opportunity, grab it with both hands, make the most out of it. Mickey Modi on to 37. पहले तो उस हाफ सेंचुरी को मुकम्मल करना है और फिर सेंचुरी के लिए भी ट्राई कर सकते हैं आज की शाम मिकी मोदी. अच्छा कनेक्शन, बहुत ही शानदार शॉट, डॉट शॉट बाउंड्री, 2 कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज. बहुत ही रेयरली ये देखने को मिलता है कि 2 लगातार बाउंड्रीज धर्मेंद्र पारिक की गेंदबाजी पर देखने को बहुत ही कम मर्तबा ये चीज देखने को मिलती है. बहुत ही सटीक बल्लेबाजी करते हुए मिकी मोदी gets into those 40s. Yes, so we've got Sanjit Srivastava here. चलिए, ये हैट्रिक ऑफ बाउंड्रीज, डॉट शॉट चौके. क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी, रूम मिला, पूरी तरह से फायदा उठाया, अपर कट किया. देखिए अपर कट था वो, और सीधे सीधा आर्यन पटनी रूबरू होते हुए बाबा के साथ. पवन पनारा थोड़े से डिस्कंफर्ट में नजर आते हुए रन संख्या जा पहुंची है गोली की रफ्तार से 86 रनों पर, 86 for 2. 2 more balls to come in this over, and Mickey Modi is on to 45, just 1 stroke away from that half century. तो किसी भी हाल में वो हाफ सेंचुरी तो पहले बनानी है, दर्ज करनी है. देखिए, he is in good form, he cannot throw it away. Mickey, he's got to continue in the same vein. शॉट सिलेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जब आप इतने अच्छे फॉर्म में हो. तो कभी कभी एक आधी अच्छी गेंद को सम्मान से खेलना बिल्कुल अनिवार्य हो जाता है. सो मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स, डू नॉट थ्रो इट अवे. क्रिकेट में बैड फॉर्म इज अराउंड द कॉर्नर एनी टाइम. पता नहीं कब वो बैड फॉर्म आ जाए. जब बैड फॉर्म में होते हो तभी एक रन निकालना भी कितना भारी पड़ता है. Yes, Karan Bhai also now sprinting onto the ground. ये GSC 2020 के लिए ये टाइम, ये बहुत ही जो एक हमारा दुर्भाग्य रहा है कि बाहुबली पवन पनारा, गोपाल भुतड़ा जैसे बल्लेबाज क्लिक नहीं हुए. शायद आज की शाम पवन पनारा कैन एंटरटेन, लेकिन गोपाल भुतड़ा, पवन पनारा, ये 2 ऐसे बल्लेबाज है. दे आर द मोस्ट पावरफुल हिटर्स ऑफ द क्रिकेट बॉल. दे आर नॉट जस्ट पावरफुल हिटर्स ऑफ द क्रिकेट बॉल, दे आर गुड बैट्समैन, accomplished batsmen. Unfortunately, GSC 2020 could not see their potential in this tournament. That is unfortunate. Two balls to go, 86 for 2. I think Bahubali is coming into the pavilion and is already been replaced with a substitute maybe. He will try and get that some quick attention. Yash Gadia is here. Hi Yash. Yes, so Yash has been in good form and he's brought his team back into reckoning, and he's also into that number 4 spot on the MVP standings, most valuable player. He's on to number 4. Superb shot, Mickey Modi. The 4th consecutive boundary, dot shot boundary. Superb batting by this man, Mickey Modi. Yes, we've got one of our champion athletes coming in, this girl. Kashika, yes, I'm sure that in the coming days she's going to be bringing so many laurels for GSC, and yes, she's going to make our city proud, our state proud. Kashika, yes, wishing you the very best. We
quite a few times watch Kashika taking so many rounds of this track. She's got great stamina, good core strength. Yes, wishing her the very best. Kashika, may you go on to bring so many laurels for the GSC. Back to Mickey. All eyes on Mickey Modi. Does he have his man? Looks like yes. The dreaded finger goes up. That's a Jensen LED lights wicket. He's been issued the marching orders, and in comes Mickey Modi. He's out for 49. देखिए ये बात होती है. चलिए कोई नहीं, but a splendid innings, isn't it? 5 consecutive बाउंड्रीज मारने के बाद वापस आए हैं पेविलियन में. बाय बाय बाय. देखिए, in spite of giving away a few runs, Dharmin Parikh has picked up his 3rd wicket. In goes Smith Shah. Yes, Mickey Modi cheered by everybody. Yeah, he's a naturally gifted player, Mickey Modi. He came good tonight, but yes, I think he's missed out on the opportunity of cashing on the good form. He went to the grind, he stayed at the wicket, but unfortunately, one run short of the 50 run mark. ऐसा लग रहा था कि शायद कम से कम आज 70 से 80 रनों की इनिंग्स खेल सकते मिकी. अरे उसका नाम क्या, वो लड़की का वो गवर्निंग काउंसिल मेंबर है. Yes, a warm welcome to Shraddha Gala ji as well, our governing council member, Shraddha ji. Yes, देखिए अभी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की बात करें हम तो आर्यन पटनी नंबर 1 पर है. नंबर 2 और नंबर 3 पर ऐसे 2 प्लेयर्स हैं जिनके लिए ये सफर समाप्त हो चुका है, शाश्वत और दक्ष. नंबर 4 पर है यश और नंबर 5 पर है विक्रम पंजवानी. तो ये टूर्नामेंट में अगर ये तीनों प्लेयर्स आगे बढ़ते तो आर्यन, यश और विक्रम पंजवानी के बीच ये कंपटीशन हो सकता है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के लिए. शाश्वत जो के 7 मैचेस खेल चुका है, सफर समाप्त हो चुका है. 99.25 की बैटिंग एवरेज रही. अगर 3 या 4 रन अगर बनाते तो 100 की एवरेज बनती. शाश्वत ने दोस्तों अपने 7 मैचेस में 5 हाफ सेंचुरीज लगाई, 5 हाफ सेंचुरीज. और ये रिकॉर्ड तोड़ना बहुत ही मुश्किल होगा. केवल आर्यन पटनी शायद इस तरह के रिकॉर्ड को तोड़ सकता है गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में, वरना तो मुश्किल नजर आता हुआ. यस, वी हैव गॉट प्लेयर्स लाइक वेदांत, यश जो इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं, लेकिन बहुत ही मुश्किल. 5 सेंचुरीज, हाफ सेंचुरीज आउट ऑफ 7 इनिंग्स, दैट इज टू गुड. डिफिकल्ट टू मैच. A man in hot pursuit, the ball will win the race. It has enough steam on it to go past the boundary. That's a dot shot boundary. Takes the score to 95. Dharmin Parikh has been expensive slightly tonight. 5 boundaries he considered. In spite of that, his analysis, his figures are not that bad. 3 overs, 28 runs and 3 wickets. All the 3 wickets that have fallen have been taken by Dharmin Parikh, says it all. He got some stick in the early over wherein 4 boundaries were hit to him, but in the end he got his man as well. Mickey Modi back in the hut.
Well bowled. Yes, purple cap की बात करें, सौरभ लोहिया from Riders, number 1, 7 matches, 11 wickets. Yash Gadia from Riders, number 2, 7 matches, 10 wickets. Rahul Jha, Monish Shah and Vedant Gadi at the number 3, 4 and 5 spots. Purple cap, all 3 from challengers. देखिए काफी मर्तबा जो ये स्टैटिस्टिक्स होते हैं वो पूरी टूर्नामेंट का, पूरे इवेंट का एक समरी आपको दे जाते हैं. चलिए इस गेम के बाद बातचीत करेंगे. अच्छी गेंद, आशीष श्रीवास्तव इज योर, पाल सिंह बराज, अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, थोड़ा सा फ्लाइट में बीट कराया था, खींचा बल्लेबाज को आगे, स्लोअर टू द एयर, स्लाइटली शॉर्ट इन लेंथ भी रखा. अच्छी गेंद. 12 ओवर के बाद 95 फॉर 3. देखिए एमवीपी की बात करेंगे. चलिए एक थोड़ा सा स्टोरी आपको बिल्कुल यहां पर हम उजागर करेंगे. मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के स्टैंडिंग्स की बात करेंगे. आर्यन पटनी तो नंबर 1 पर है, 49.127 पॉइंट्स. वॉरियर स्टिल इन द टूर्नामेंट. शाश्वत और दक्ष 2 और 3 नंबर पर है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स. यानी कि ये 2 प्लेयर्स नंबर 2 और नंबर 3 पर होने के बावजूद उनकी टीम के लिए सफर समाप्त हुआ है. ये बात इस बात को दर्शाती है कि टीम एफर्ट नहीं हुआ है. शाश्वत और दक्ष को जिस तरह से उनकी टीम की तरफ से साथ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, जिसके चलते नंबर 2 और नंबर 3 के प्लेयर्स शाश्वत और दक्ष दोनों ही टीम चार्जर्स के होने के बावजूद चार्जर्स का सफर समाप्त हो चुका है. सो वी नीड टू प्ले एज अ टीम. This is not about individual brilliance. Yes, a T20 format game can be about individual brilliance, but when you're playing 7 round robin league matches, you have to play as a team. And that has not clicked for Team Chargers in this season, nor has it clicked for Team Super Kings. So this is all about your team playing as a cohesive unit and each and everybody chipping in. So that really tells the story here. This is a stock delivery and this is one of the pet shots of Tushar Uchil as well. So this should be a good contest. Captain to his counterpart, Aryan to Tushar. 2 dynamic players. This time into the stumps. A good change in line from Aryan. The earlier one was outside the off stump. This one was into the stumps. Warm welcome to Parag Shah. Very well bowled. This is the ball that he needs to bowl more consistently. Slow to the air. As a spinner, you have to beat the batsman in the flight more than anything else. Very nicely bowled and well played as well. Nicely played. One ball to go, bhai. Well flighted, nicely put into the gap, leaning into that shot.
playing through the line, on the up. That's a dot shot boundary. That will spoil his figures. That was the last ball of his spell. 100 runs up on the board for Team Super Kings. 13 overs, 100 runs for the loss of 3 wickets. The spell of Aryan Patni comes to an end. 4 overs, 26 runs. Nothing to show in the wickets column. Yes, a decent spell, but not an impact-creating spell by Aryan Patni. Yes, because Amarkant Jain is playing this match, it will be maybe up to me to conduct the mid-innings session. Yes, I'll request Vinay Bhai Surana to line up the panelists. Vinay Bhai, for the mid-innings break. A warm welcome to Yogesh Sharma. इस अमोल पोलके का भी हम स्वागत करेंगे. Yes, Avin, yes, Avin has really been one of the key links for Team Warriors. Yes, he has been an asset to the team. Every time the team has been in trouble, Aryan Patni has given the ball to Avin, and more often than not, he's been quite decent. Yes, so one of the key players. Yes, Avin has been good in patches, but he needs to be more consistent. He needs to come up with those match-winning performances, those big scores, big spells. He's given a glimpse of his potential, but yes, he needs to deliver in a big way to come into that big league. He's got this potential, yes, no doubt about it. Avin? It's going to be Karan Singh, Walia and Yash Gadia with me during the mid-innings session. Good pace, nicely worked away, standing tall on that one, rising with the delivery, effortless shot, dot shot boundary will take the score line to 105. Yes, just look at the way he rose with the delivery. जैसे ही गेंद उठी उसी तरह से उसी समय बल्लेबाज भी उठा और बिल्कुल अपने नाक के नीचे उस शॉट को खेला, केवल कलाई के सहारे मोड़ दिया. अच्छी तकनीक, नाइसली प्लेड, वेरी वेल एग्जीक्यूटेड, वाजंट अ बैड डिलीवरी, इनफैक्ट अच्छी सरप्राइज डिलीवरी थी. अगर ये डिलीवरी थोड़ा सा आउटसाइड द ऑफ स्टंप होती तो बहुत ही बेहतरीन होती. चेंज इन पेस, बहुत ही बढ़िया गेंद, दैट वाज रियली from back of the hand, and yes, into the referral. This is going to be interesting. शायद पता नहीं तुषार की लैंग्वेज कुछ अलग दर्शाती हुई. That is Jensen LED lights throwing light on the decision. The DRS. This could be dangerous. Maybe शायद हाथ लगा होगा, देखना होगा. चले, कोई जरूरत ही नहीं कुछ कहने की. तुषार is on his way back. That says it all, isn't it? That says it all. But still, we will wait for the third umpire signal. And yes, it is already on screen. Yes, it is out. Good piece of work. The substitute Rohit has effected that run out. And that is big fish in the net. That is the wicket of Tushar Uchil we are talking about. That could be a huge difference. That could really be a difference of 30-35 runs, that wicket of Tushar. In comes Rajiv, is it? Rajiv? Yes, looks like it is Rajiv. So this is what one would call playing as a team. Aryan has assigned a role to each and every member of his team, even the players warming up the benches. Everybody has been assigned a role. You just need to stick to your role. You need to just perform your role to perfection. That's just about it.
A warm welcome to Harsh Desai. हर किरदार को एक भूमिका अदा करने के लिए जिम्मेवारी दी है आर्यन ने, और वॉरियर्स का करीबन हर प्लेयर ठीक तरह से अपनी भूमिका को निभाते हुए, जिसके चलते काफी अनुकूल स्थिति में है इस जीएससी 2020 में टीम वॉरियर्स. सो दे आर प्लेइंग टू अ प्लान, दे आर हेडेड इन द राइट डायरेक्शन. इस तरह के लंबे अरसे तक चलने वाले टूर्नामेंट में आपको चाह और राहत दोनों की जरूरत होती है. केवल चाहत से नहीं होगा, काम नहीं बन पाएगा. अगर जीत के शिखर तक पहुंचना है तो आपको एक रास्ता खोजना होगा. यू हैव टू ड्रॉ आउट योर प्लान. अच्छी गेंद देखिए आप, कितनी अच्छी तरह से आविन वो बैक ऑफ द हैंड कटर गेंद डालते हैं. बहुत ही बढ़िया, नाइसली डिस्गाइज्ड. आई थिंक अगर ये चेंज ऑफ पेस गेंद की बात करें तो आविन इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स. Quite an effective change in pace delivery, seems to be bowling at all times. That is one of his stock deliveries. Yes, now making a comeback into this match, trying to get into the driver's seat. The 2 wickets of Jugraj and Tushar Uchil definitely must have pulled things back for Team Warriors, and definitely that wicket of Mickey Modi has made a big difference. Scoreline at the end of 14 overs is 106 for the loss of 4 wickets. Aryan Patni, always he does defy all odds, all logic. He can be an insane player. His potential, his talent, his performances could really drive us all crazy. Is that good? Yes, he is on the threshold of a big career, Aryan Patni. He's got to keep working hard. We all are praying for him. He's got a great mentor and a guide in the form of his dad, Rajesh Patni. No better man than Rajesh Patni to guide him along the way. And yes, GSC under the leadership of Karan Singh Walia is providing him the much required platform to players like Aryan, Vedant, Daksh, Jugraj, Subramaniam, Sashwat, yes, Rohan Gajjar, Aniket Kawade, they are all established players. King Shukrai. This could be dangerous and we'll have to wait and watch. It's been referred. Jensen LED lights. Throwing light on the decision is the tagline. Quite an apt one. Over to Purandare. Yes, the decision has already been conveyed, but still we will wait it for. There you go. It's all right up there on screen. It is out. Rajiv back in the hut. In comes Bhavnit Birdie. विवेक भाई नरसरिया का भी हम स्वागत करेंगे. विवेक भाई, गुड इवनिंग. Karan Singh Walia, Kaushik Mehta discussing things on the sidelines, making sure that everything is just about perfect. Yes, players like members like Vinay Surana, Subbu Bhai, Captain Abhay, Pramod Kashyap, they all are such great key members of the organizing committee. Amarkant Jain, whenever he is not playing, is always involved with the organization. And yes, जैसे कि करण भाई ने बताया कि दक्ष अग्रवाल हो, आर्यन पटनी हो, they always share their ideas with Karan Singh Walia, and Karan Singh Walia is always game to accept new ideas. So yes, it's a great team effort at the GSC. It's a great cricket festival, a great cricket season under the lights. Superb, a fantabulous season. For the moment, Bhavnit Birdie to face Baba.
Good piece of fielding by Parth. Well flighted, not much of footwork. He was rooted into his crease. खड़े खड़े खेला. Well bowled, brilliantly bowled. And yes, we'll have to wait and watch. And that's a Jensen LED lights wicket that has fallen. Wickets are falling like 9 pins in the driver's seat. शिकंजा कसा है, मैच पर कब्जा जमा लिया है वॉरियर्स ने. आर्यन पटनी ने पहले ही बताया था कि दिस इज द मैच विच दे आर गोइंग टू बी ट्रीटिंग लाइक अ नॉकआउट मैच. इट्स अ डू और डाई सिचुएशन. यस, इन द ड्राइवर्स सीट मोमेंटम इस वक्त वॉरियर्स के साथ. और एक विकेट धर्मिन पारिक के नाम. धर्मिन पारिक को आज रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन. 6 विकेट्स गिरे, 4 विकेट्स गेंदबाज ने लिए हैं और 2 रनआउट हुए. जो भी विकेट्स गेंदबाज ने लिए हैं, यानी कि चारों ही विकेट्स धर्मिन पारिक ने लिए. क्या बात है, क्लीन बोल्ड हुए हैं. रिप्ले में हमने कंफर्म किया और अब देखना है कि कौन है. शायद इट इज इट मोहन? Yes, it is Mohan Mittal. Passionate cricketer, good thinking cricketer. He loves the game. Very chirpy behind the stumps. Hamesha he wants to make some noise behind the stumps. A very talkative wicket keeper. Baba, can he get that fifer? The last ball. बाबा कोई आखिरी गेंद, आखिरी मौका है. केवल एक ही गेंद बाकी उनके स्पेल में फाइफर लेने के लिए. अगर मैं कप्तान होता तो शायद एक स्लिप और एक सिली पॉइंट भी मैं लगाता बाबा को. बनता है बिल्कुल. आई मीन, व्हाई नॉट. Here we go, the final ball of Papa's over. Well ball, बढ़िया गेंद. अच्छी तरह से उस गेंद को निगेट भी किया मोहन ने. चलिए, एक बहुत ही उम्दा स्पेल मुकम्मल हुआ. 4 ओवर्स के बाद 31 रन देकर 4 विकेट्स हासिल किए हैं. 4 जेंसन एलईडी लाइट्स विकेट बाबा के खाते में. अच्छा, एक बहुत ही अच्छा स्टैटिस्टिक देके हमारे युवा स्कोरर ने दिया है. हर ओवर में बाबा ने एक विकेट लिया है, 4 ओवर्स में. गुड स्टैटिस्टिक अब्दुल, वेल डन. हर ओवर में एक विकेट लिया है बाबा ने. यस, देखिए, वॉरियर्स इज द टीम विच हैज प्लेड एज अ टीम. दे हैव जेल्ड एज अ कोहेसिव यूनिट. Team Warriors more than any other team. Yes, Team Challengers have been brilliant as a team in patches, but Warriors has played like a team more consistently. So yes, it's going to be the team effort versus the individual brilliance in this tournament as we move ahead. नजाकत से खेला है. बहुत ही अच्छा एफर्ट रवि नारायण साहू का, लेकिन बाउंड्री नहीं रोक पाए. डॉट चॉट चौका. नजाकत से खेला मोहन ने. डेफ टच, गुड टाइमिंग इनटू द गैप. Back of the hand, change in pace.
कल का मैच नंबर 27 गैंगस्टर्स बनाम ग्लैडिएटर्स टुमारो 6:30 PM मैच नंबर 27 गैंगस्टर्स वर्सेस ग्लैडिएटर्स. Important game for gangsters, very very important. Too wide. We are into the 16th over. 4 balls to come in this over. Being bowled by Avin Patel. अच्छा एफर्ट रोहित राजन का. इस आज बहुत ही उम्दा स्पेल किया है रवि नारायण साहू ने और फील्डिंग भी बहुत ही अच्छी की है रवि नारायण साहू ने. आज बिल्कुल ज्यादा फिट लगते हुए फ्रेश लगते हुए रवि नारायण साहू. दिस हैज बीन अ गुड नाइट फॉर रवि साहू. वार्म अप करते हुए शायद अगली ओवर रवि नारायण साहू डालने की तैयारी करते हुए. नाही बोलत रे एक माफी मागतो तुझे पाया पडतो तुझे त्याला सांग त्याला मला पाया पडायचे त्याचे. Into the gap, good batting by Mohan Mittal. Dot shot boundary takes the score line to 120 for 6 into the 16th over. 4 more overs to come after this. Can they go past the 160 run mark? एक समय ऐसा था कि जब लग रहा था कि 180 के उस पार बड़ी आसानी से टीम सुपर किंग्स जा पहुंचेगी. वापसी की लगातार विकेट्स गिरते रहे. मिकी मोदी का विकेट, जुगराज का और फिर तुषार उच्चिल का. ये मानो एक ठहराव आया इनिंग्स में और रन रेट काफी नीचे आई. अच्छी गेंद. That hurried onto the bat. Yes, Team Super Kings has quite some thinking to do. They have got good food for thought कि किस तरह से अब T10 में वापसी करे, किस तरह से comeback करे. They'll have to reorient themselves as a team. They'll have to sit together, brainstorming करना होगा. They'll have to come up with fresh ideas for the T10. That's a no ball. Nicely played by Mohan Mittal. Dot shot boundary. That's a free hit. Mohan Mittal looking good. We've already seen 3 dot shot boundaries of the blade of Mohan Mittal. So yes, good batting, good rear guard action by Mohan Mittal. He needs to stay. That back of the hand, slow delivery. Mohan Mittal is already on to 15 runs of 7 balls with the help of 3 dot shot boundaries. He needs to continue in the same vein. 16 overs and 126 for the loss of 6 wickets. The current run rate 7.88, not bad. The thing to worry about is those 6 wickets. 6 top order batsmen back in the hut. It is the low middle order now in action for Team Super Kings. Yes, Super Kings के लिए काफी सोच फिर से एक बार दोहरानी होगी. बैठना होगा, साथ में मंथन करना होगा कि कहां पर हम गलत गए. दे नीड टू कम बैक. T10 एक बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है. So yes, they'll have to make a mark in that T10 event. Yes, 45 प्लस का इवेंट तो बिल्कुल होगा 5th of Jan से. So ये सीजन मार्गस्थ रहेगा.
Well bowled by Parth. क्रीज के कॉर्नर से गेंदबाजी करते हैं, ज्यादा टर्न कभी कभी नहीं मिलता है विद द आर्म गेंद. अच्छी टाइमिंग और वन बाउंस अमरकांत जैन के पास. यस, मेरे साथ में होंगे करण सिंह वालिया और यश गाडिया मिड इनिंग्स सेशन के लिए. इस इनिंग्स के बाद ड्यूरिंग द ब्रेक. और ये डायरेक्ट ही तोड़ती तो मोहन को वापस आना पड़ता. He had only one stump to aim at. रोहित राजन. चले, हमारे स्टैटिस्टिशियन ने बताया कि पहुंच चुके थे मोहन. ज्यादा बाहर, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वाइड का इशारा. हमारे अंपायर अक्षय शेटे. स्पिन बॉल हिम, गोइंग फॉर एन एक्सपेंसिव शॉट. बल्ला उन्होंने घुमाया और गेंद को जगह मिली स्टंप्स में हिट करने के लिए. दैट्स अ जेनसन एलईडी लाइट्स विकेट. विकेट नंबर 7. Yes, in comes a good talent, Ayush Agarwal. देखिए आयुष पहले ही गेंद के साथ किस तरह से मिडलिंग करता है. गुड टैलेंट, अच्छे बल्लेबाज है आयुष. अपनी रीच का, अपनी हाइट का अच्छा फायदा उठाते हैं आयुष अग्रवाल. ही गेट्स दैट लॉन्ग फुट फॉरवर्ड, फ्रंट फुट पर खेलना उन्हें पसंद है. एक अच्छे ऑलराउंडर है, बट अभी तक वो बड़ा परफॉर्मेंस, मैच विनिंग परफॉर्मेंस गए सीजन में भी नहीं देखने को मिला और इस सीजन में भी आयुष की तरफ से वो बड़ा मैच विनिंग परफॉर्मेंस अब तक देखने को नहीं मिला है. इट्स बीन गुड इन पैचेस, लेकिन इफ ही हैज टू ब्रेक इनटू दैट टॉप लीग ही नीड्स टू परफॉर्म मच बेटर एंड मच मोर कंसिस्टेंटली टू ब्रेक इनटू दैट लीग ऑफ टॉप 20 प्लेयर्स एट द GSC. He's got to do a lot of hard work. He's got the talent, mind you. He's a very good prospect. He will have to be mentally more strong. That self-confidence has to be taken much higher for Ayush. बहुत ही सटीक बल्लेबाज है. He's got a good head over his shoulders. He nicely works the ball away into the gaps, plays with soft hands. He keeps the strike rotating at all times. Ayush is that kind of a batter. Nicely played. Good piece of work in the deep. There is Abhishek Gosalkar. Yes, he is starting to make a name for himself. Abhishek Gosalkar, an absolute live wire in the field and a good batter. Good attacking game that he's got. Abhishek he's already taken a brilliant catch earlier in this innings. 131 for 7 at the end of 17 overs. That current run rate has come down to 7.71 and over. At least 8.5 is what Tushar Uchil would be wanting at this stage. But yes, looking slightly difficult at this stage. Maybe 8, they could reach the current run rate of 8 and over maybe.
18 balls to go and 30 runs at least required to go past that 130 run mark. Possible, absolutely possible. The ball was always going to be falling behind the batter. Smart running between the wickets, fresh legs, young legs. .133. That will run away. It has enough gas on it to go past the boundary. That's a dot shot boundary. Takes the score to 137. Welcome runs here being added to the kitty of Team Super Kings. Team Warriors will have to be careful here. They not only do they have to register a win tonight, if they can register that win with a good margin, that will really take their net run rate to a better position, and that is really what is at the back of the mind of Aryan Patni. Not just a win, they need a good win. Well bowled, that head went up in the air. You got to play with a steady head. That balance at the time of executing the shot is very crucial. You got to be nicely balanced. You got to play with a steady head. Keep your eyes on the ball till the very last moment. Nice shot. That second run is definitely on the cards and it will be taken. Maybe even a third. No chance for that third run to be taken. That couple takes the score to 139 for 7. 2 more balls to come in this over. Yes, they are headed to that 160 run mark. We'll have to wait and watch. Evan with his change in pace deliveries. Deft touch played into the gap. Rohit Rajan in chase. He will stop it, but not before that a couple is taken. This is good batting, a sense of urgency being exhibited. Sensible batting. They're playing the ball into the gap, playing with soft hands. They're taking that first run swiftly. Good batting. 141 already. 1 more ball to come. 141 for 7. It is Evan to bowl to Smith. It's been a good knock by Smith. Not so well timed. We'll have to wait and watch. That's a Jensen LED lights wicket. Nicely taken, a soft dismissal. That's the end of the over. And Ayush will be back on strike. Ayush will be back on strike to face the first delivery of the next over. And it's going to be Ravi Narayan Sahu. Looks like he's starting to get ready. Pritpal Singh Baraj, the man with the golden arm, the owner of the team and one of the finest senior bowlers at the GSC, Pritpal Singh Baraj. Yes, Yash getting ready, Yash Gadia getting ready mentally for the mid-inning session. Alongside Yash Gadia, it's going to be Karan Singh Walia. Yes, this DRS setup has made things interesting for the GSC 2020, but yes, very challenging for the third umpire. Very challenging. As the third umpire with the replays being offered to you, we all absolutely want that the third umpire should at least not commit any mistake, but with the limited technology that is available to the umpires, it's a tough ask. But yes, so with the third umpiring, I think our umpires have done pretty good. Ravi Narayan Sahu, who's been in good touch, he's looked so good tonight. He's exhibited that extra energy in the field. He's bowled with a purpose. His body language has been quite positive tonight. He's looked fitter tonight. This is a good sign for Team Warriors that Ravi Narayan Sahu is looking fitter and fresher. This is indeed a good sign for
आर्यन पटनी. Slightly wide. या फिलहाल T20 में वो ये ट्रेंडिंग डिलीवरी हो चुकी है. सभी गेंदबाज गेंदों को बल्लेबाज से दूर रखते हैं. गत एक साल से ये ट्रेंड आई है. ज्यादातर तो वो यॉर्कर डिलीवरीज आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वाइडिश आउटसाइड द ऑफ स्टंप, फुलर लेंथ डिलीवरीज. बिल्कुल आज से कल ये ट्रेंडिंग डिलीवरीज है गत एक डेढ़ साल से. To keep the ball away from the batsman and wider and fuller outside the off stump. 143. Very well bowled. Yes, so the hard work that he is putting into his game, the long hours that he is putting in to get fit, paying good dividends here for Ravi Narayan Sahu. Very steady and very reliable with his bowling, especially with the new ball. मैंने पहले कहा था कि आज रवि नारायण साहू काफी फ्रेश लग रहे. पहली ओवर के बाद कहा था और बिल्कुल आज एक ए ग्रेड परफॉर्मेंस दिया है. डेफ्ट टच, अच्छी फील्डिंग शॉट थर्ड पर. Yes, as a senior cricketer, Aryan Patni would be expecting such a performance from his main bowler. He's not gone for the wickets tonight, but he has bowled a tight line and length. He's asked questions of the batsman. He's managed to keep them quiet. पेनल्टी में 2 ओवर की आखिरी गेंद आने बाकी. इस वक्त रन संख्या है 145. 7 गेंद आनी बाकी कुल मिला के. 160 तो अब भी करना चाहेंगे तुषार उच्चिल और उनकी टीम. एटलीस्ट 160 यानी कि वो करंट रन रेट कम से कम 8 का तो नजर आए. बहुत ही सटीक स्पेल वहां पर समाप्त हुआ. बहुत ही उम्दा गेंदबाजी के. मेरे ख्याल से एक भी चौका नहीं दिया है शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. पूरे स्पेल में एक चौका दिया है. उनका एनालिसिस है 3 ओवर 14 रन अब तक. Yes, welcome to Vipul Kala, the senior wicketkeeper batter. Yes, अब तक कोई भी सीनियर क्रिकेटर 45 प्लस के बारे में नहीं सोच रहा है. विशेष रूप में जो प्लेयर्स इस GSC 2020 को खेल रहे हैं वो इस वक्त पूरी तरह से उनका फोकस इस इवेंट पे बना हुआ है. लेकिन जो दूसरे प्लेयर्स जो है वो नहीं खेल रहे, वो 45 प्लस की तैयारी करते हुए. आखिरी ओवर को लेकर एविन. स्ट्राइक पर प्रीतपाल. बहुत ही ज्यादा वाइड. लाइन थोड़ी सी खराब थी, लेंथ बहुत ही बढ़िया थी, पेस भी बहुत ही अच्छी थी. थोड़े से दिशा से भटके फलस्वरूप एक एक्स्ट्रा रन मिला वहां पर. रन संख्या जा पहुंची 147 रनों पर.
ये गेंद काफी बढ़िया थी। विकेट कीपर सागर उच्चिल। सागर उच्चिल की बात करें तो नंबर 3 पर है ऑरेंज कैप स्टैंडिंग्स में। बहुत ज्यादा शॉर्ट और वाइड। सागर उच्चिल ने 6 इनिंग्स में 240 रन्स बनाए हैं, 2 अर्धशतक उनके नाम दर्ज हुए हैं। उनकी बैटिंग एवरेज सागर उच्चिल की 6 मैचेस के बाद है 48 रन। चले थोड़े से डेस्परेट थे। जेंसन एलईडी लाइट्स विकेट गिरा है प्रीतपाल सिंह वराज के रूप में। प्रेशर बिल्ड हुआ था, he succumbs to the pressure. 148 for 9. The last man in now, Shubhankar. Warriors have clawed their way back in the match. They are in the driver's seat. The momentum slightly with the team Warriors. But yes, they cannot afford to relax. They cannot afford to be complacent because they are up against a wonderful team like Team Super Kings. Team Super Kings एक ऐसी टीम है जिसे अगर आप उंगली दोगे तो हाथ पकड़ लेंगे. So you have to be very careful when you are playing against teams like Super Kings. They are playing for pride, which is very dangerous. They would like to end their campaign with a win here. और एक वाइड देके बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन थोड़े से दिशा से भटके हैं. अगर यही गेंद आधा फुट अंदर होती तो सभी गेंद काफी अच्छी होती. 3 या 4 वाइड गेंद डाली है एविन ने. सोच अच्छी है. उससे स्लो डिलीवरी की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन वो फास्टर वन थी. दैट वाज बैंग्ड इन. 150 runs up on the board. 150. Yes, something to defend. At least the bowlers of Team Super Kings, they have got a decent target to defend. Decent score to defend. Well bowled. It's been referred, but that throw should have been flatter. देखिए विकेट कीपर के हाथ ऊपर गए उस थ्रो को कलेक्ट करने के लिए. अगर सीधा ग्लव्स में होता या तो डायरेक्ट होता स्टंप्स में तो डेफिनेटली आउट होते. वो ऊपर हाथ गए और फिर नीचे आने तक बल्लेबाज शायद पहुंचा होगा. विल हैव टू वेट एंड वॉच. यस, द सिग्नल हैज बीन, द डिसीजन हैज बीन कन्वेड. इज नॉट आउट, द बैट इज इन. लेकिन अगर रिप्ले देखिए, अब अगर देखने को मिले, देखिए बैट ग्राउंड भी नहीं किया. ये एक बड़ी गलती की थी आयुष ने, लेकिन भाग्यशाली इज नॉट ग्राउंडेड द बैट. सीधा सीधा बल्ले को अंदर रखा. दिस कैन बी डेंजरस. इट वाजंट आयुष, इट वाज शुभांकर. Always got to drag your bat in. This is the first basic thing as a batsman. Always drag your bat in. Do not put your bat in. Drag it in. What a shot! A superb shot. क्या टाइमिंग बढ़िया. आयुष अग्रवाल, दैट्स अ पारी ग्रुप छक्का. एफर्टलेस. क्या बात है. 158. इस मैच को जीतने के लिए 159 रन्स बनाने होंगे 2 मिनटों के बाद. मिड इनिंग्स ब्रेक के साथ करण सिंह वालिया एंड यश काडिया आफ्टर 2 मिनट्स.
हेलो। Yes, good evening and a warm welcome to the mid-innings analysis session. I have with me the player of Team Gangsters, the captain of Team Gangsters, and also the man in charge of the Outdoor Sports Committee, the chairman Karan Singh Walia. And to my left is a youngish talent, a wonderful captain, Yash Gadia, the captain of Team Riders. Welcome, gentlemen. चलिए, सबसे पहले करण सिंह वालिया के साथ मैं शुरू करता हूं। वॉरियर्स ने आज एक बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला है। एक समय ऐसा था कि लग रहा था कि सुपर किंग्स शायद 180 के उस पार जाए, लेकिन मिकी मोदी जो आउट हुए 49 पर, तुषार उचिल जो रन आउट हुए, द ब्रेक्स वर पुट ऑन एंड दिस गेम इज नाउ डेफिनेटली हेडेड टुवर्ड्स मे बी वॉरियर्स, देव गॉट अ बिग चांस. See, it is lack of practice on behalf of Mickey Modi's being at 49, playing so well, and wickets are falling from other end. He should have applied himself more and played till the end, scored the good 60-70 runs. They are playing for their pride and taking nothing away from Team Warriors. They are a champion side. They are playing like champions. Guys like Dharmen Parekh come, they pick 4 wickets. It's showing how they're applying themselves on wicket. They're just bowling ball to ball. They're taking the match over to over. And it feels good when some teams comes and perform so regularly, consistently like this. Yes, absolutely well said, Paji. Yash, see, 2 senior bowlers, Dharmen Parekh, though he went for some runs in that particular over, he was hit for 4 boundaries, but he's picked up 4 wickets as well. And Evin Patel with his change in pace deliveries has picked up 2 wickets, 2 run-outs. So that has been the story. Definitely, with the way the guy is, I've met him quite a couple of times, and he's always like, no batsman can hit me on his day. He thinks that way, and the way he thinks is enough for him to, just take those wickets. So that is great for a captain to have, and irrespective of the result, that thinking is enough for the bowler. Yes, this match tonight is the super night for Team Warriors. किसी भी हाल में इस मैच को जीतना है, और वो थोड़े से मार्जिन को भी जहन में रखेंगे, क्योंकि ना केवल पहले 2 स्पोर्ट्स में क्वालिफाई करना है, नेट रन रेट का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि गैंगस्टर्स जो कि 8 पॉइंट्स लेकर दिया सिटिंग प्रीटी, वो मैच के ऊपर काफी दारोमदार होगा. तो इस लिहाज से इस मैच को अच्छे मार्जिन के साथ जीतना ही होगा टीम वॉरियर्स को. डेफिनेटली हो सकता है कि आर्यन माइट थिंक ऑफ दैट, बट आई रियली थिंक 160 के टोटल में ही वोंट थिंक अबाउट द मार्जिन. ही विल जस्ट गो फॉर द चेज एंड देन लेट्स सी हाउ इट गोज इन द एंड. So yes, he will be more focused on winning this match and getting those 2 points to get onto that 10. Paji, yes, अभी 3 टीम्स ऐसी है जो 8 पॉइंट्स के साथ दे आर सिटिंग प्रीटी. कुछ भी हो सकता है. The main thing for all these 3 teams is to make sure that वो पहले 2 स्थान में आए, ताकि और एक एक्स्ट्रा मौका बने. ऐसा लग रहा है कि शायद चैलेंजर्स ज्यादा से ज्यादा नंबर 2 पे आएगी शायद. तो जो दूसरे स्पॉट के लिए 3 टीम्स आपस में फाइट करती हुई, राइडर्स, वॉरियर्स और गैंगस्टर्स. तो क्या होगा इस टूर्नामेंट की ब्यूटी? क्या है कि अभी लास्ट तक भी टेबल ओपन है. यू डोंट नो कि फर्स्ट पे कौन सी टीम है, सेकंड पे कौन सी टीम है, थर्ड पे कौन सी टीम है. राइडर्स इररिस्पेक्टिव दे आर ऑलरेडी देयर in the top 4. But the beauty of this tournament and the most competitive thing about this tournament is open till the end. तो यही इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा हमारा क्रेडिट है कि अच्छा क्रिकेट हुआ,
अनप्रिडिक्टेबल क्रिकेट हुआ, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सका कि लास्ट तक कौन जीतेगा, कौन क्वालिफाई करेगा, कौन रन करेगा, कौन विकेट लेगा। और आप देखिए ना, अच्छे लड़के आ रहे हैं, यंग लड़के आ रहे हैं, धर्मेंद्र पारिक जैसे अच्छे एक्सपीरियंस बॉलर हैं जो आज भी मतलब 4 विकेट निकालते हैं। मिकी मोदी हिटिंग हिम फॉर 4 बाउंड्रीज इन दैट ओवर, स्टिल ही मेड श्योर दैट ही पिच द बॉल इन द राइट स्पॉट और उनका विकेट निकाला स्टंप करके। सो क्रेडिट गोज टू द बॉलर। बैट्समैन अपनी नर्व होल्ड करे, टूर्नामेंट ऐसा ही लास्ट तक ओपन रहे, और क्या चाहिए ऑडियंस को। गैंगस्टर्स का जो मैच होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच होगा कल। गैंगस्टर्स बनाम ग्लैडिएटर्स ये मैच है। ग्लैडिएटर्स मेरे ख्याल से इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है, लेकिन अगेन दे विल बी प्लेइंग फॉर प्राइड और अनिकेत कवाले जैसे स्टार प्लेयर कप्तानी करेंगे, तो एक थोड़ा सा चैलेंज होगा। तो किस तरह से मेंटली आप तैयारी कर रहे हो इस बड़े मैच के लिए? ग्लैडिएटर के साथ कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है क्योंकि पता नहीं चलता कप्तानी कौन करता है। अनिकेत कवाड़े करेंगे, संजीत करेंगे, सचिन करेंगे, कौन करेंगे लास्ट मोमेंट तक तो वो पता नहीं चलता है क्योंकि उनके ओनर भी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। तो वी विल टेक द मैच एज इट कम्स। हम लोग अच्छा क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे, अच्छा बैटिंग करेंगे, अच्छा बॉल करेंगे, अच्छा फील्ड करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि मैच अच्छे से अच्छे मार्जिन से जीतें। Yes, Karan Baji, आप अच्छे फॉर्म में हो। You've already had an innings of 68 plus का, वो दिन 35 plus की innings खेली है, तो you would really be wanting to carry on the same form, क्योंकि अगर आप क्लिक कर जाते हो at the top of the innings, so it becomes an added bonus and things start to look pretty. See, I'm practicing very hard and it's showing on the field, I feel. और कोई भी आदमी रिस्पेक्टिव ऑफ द एज अगर एफर्ट डालेगा, फील्ड पे टाइम स्पेंड करेगा, बॉलिंग करेगा, बैटिंग करेगा, फील्डिंग करेगा, तो रन बनेंगे, विकेट आएगी, कैचेस होंगे, रन रुकेंगे। तो मैं सबसे यही कहता हूं कि क्रिकेट खेलना है तो ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए फील्ड के ऊपर, और आप जितना टाइम स्पेंड करेंगे उतने रिजल्ट्स मिलेंगे। और गैंगस्टर में ऐसा नहीं है कि दे आर इन एनी वे डिपेंडेंट ऑन मी। वी हैव ग्रेट गाइज लाइक किंशुक इज देयर, धुन इज देयर, कुणाल भावसर इज देयर। अनफॉर्चुनेटली विकास भाई इज इंजर्ड नाउ, ही इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट, बट वी हैव अ वेरी गुड टीम, वेरी गुड साइड हु कम एंड चिप इन। इस बार हमारे चिप्स डाउन थे तो राम गोयनका आया, ही स्कोर्ड अ गुड 50। सो वी हैव पीपल हु विल कम स्कोर। आप देखो कुंवर महाजन हमारा सरप्राइज पैकेज है, लास्ट गेम में 5 विकेट्स ले गया एंड ही बोल्ड ब्यूटीफुली विकेट टू विकेट। सो वी हैव मैच विनर्स इन एवरी player. Yes, Gangsters is definitely looking good, and yes, all credit to Yash Gadia for his superb captaincy and the way he's got his team right back into the scheme of things. They are sitting pretty at the number 2 spot. Lekin Yash, it will be a challenge for you to maintain their momentum right through. This is the business end now. So how is your team mentally geared up for this important stage now? Honestly, I think my team is quite well prepared because we had first 2 losses in the tournament and no one was really backing us to make to the playoffs. So that is what I loved the most about my team, that they always believed that we can make to the top 4, and here we are today in the top 4, and let's see how it goes. The momentum is on our side right now. Let's see how it goes. I think the most wonderful thing for Team Riders is that अगर आप पर्पल कैप के स्टैंडिंग्स देखें तो पाजी इनिशियली टीम चैलेंजर्स के राहुल झा, वेदांत गाडी और मोनीश, इन्होंने 1, 2 और 3 स्पॉट्स ऑक्यूपाई किए थे कम से कम 6, 7, 8 मैचेस तक। लेकिन अब राइडर्स के यश गाडी और सौरभ लोहिया नंबर 1 और 2 पर जा पहुंचे हैं। ये एक बड़ा फैक्टर रहा है और ये दोनों ही अब नंबर 1 और 2 पर है पर्पल स्टैंडिंग्स। सी राइडर्स एक चैंपियन टीम है एंड आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड यश इज अ चैंपियन प्लेयर, और ये जैसे अपने प्लेयर्स को, यंग प्लेयर्स को ग्रूम करता है, आई थिंक नोबडी एल्स मार्चेस देयर ट्रूप लाइक ही डज। सो एक एडेड एडवांटेज है एंड द कॉन्फिडेंस ही गिव्स टू हिज प्लेयर इज ऑलवेज एन एडेड एडवांटेज। और ये राइट टाइम पे पीक कर रहे हैं, जैसे हम लोग राइट टाइम पे पीक कर रहे हैं। हम दूसरी टीम्स का कह सकते हैं वो कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं तो कभी भी फंबल हो सकते हैं, बट वी आर पीकिंग एट द राइट टाइम। हम अपने अच्छे मैचेस हारते हुए भी आ रहे हैं, हमने टफ मैचेस भी निकाले हैं, बट बाकी टीमें देखेंगे तो वन साइडेड जीत रही हैं। सो I give Ryder and Gangster equal chance to playing more good cricket than other teams. Yes. Taking nothing away from other teams. But. Yes, absolutely. एक इस तरह के बड़े टूर्नामेंट में मेंटेन करना, वो पिक करना सही समय पे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन टू यश। यश, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की हम बात करेंगे। MVP आर्यन पटनी इज राइट अप देयर नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 पर शाश्वत और दक्ष, in spite of the individual brilliance, because they didn't click as a team, the players did not rotate around these 2 star players, their team is out of the tournament, and you yourself had a number 4 and Vikram Panjwani number 5. शाश्वत और दक्ष को सपोर्ट नहीं मिला जिसके चलते टीम चार्जर्स इस टूर्नामेंट में उनका सफर खत्म हो चुका है।
We were in the same situation last year in the team riders where me and Vedant were scoring major of the runs and Sanjeet was taking all the wickets. So we learned a hard lesson last year that you need a team to win a tournament. You can just play individually well, but the tournament is won by a team, not two individuals. It's absolutely well said. And yes, Paji, congratulations. You have been brilliant both off the field and on the field. This is a new season and it's a good season for you, both as an administrator and as a player. So things are looking good. Wishing you all the very best for a rocking season. Thank you, thank you. Yes, so with this we come to an end. Jitega? Yes, sir. Who will you put your money on? If RM gets out early, I'll put my money on Super Kings. Kya baat hai. And Yash? I want to see Jugraj versus Aryan, how that shapes up. Okay, so that's the news here. Thank you, ladies and gentlemen, for connecting with us for this mid-innings analysis session. Thank you. We join with live action in the next 7 to 8 minutes. Thank you. इस बीच में हमारे अतिथि भरत भाई और राजेश जी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं. गुड इवनिंग सर एंड वार्म वेलकम. यस, फिर से एक बार प्रमोद भाई कश्यप की कवरेज टीम को मैं शुक्रिया करूंगा. वाकई में क्वालिटी पिक्चर्स हम सभी को लेते. एक अच्छे फॉर्म में है प्रमोद कश्यप और उनकी टीम गत 15-20 दिनों से दे आर इन गुड फॉर्म. Yes, wishing them the very best. आसान नहीं होता है. Umpires को भी thank you. A big thank you to our sponsors, Jensen LED Lights, Hex, Gajjar Group, Shakti Corporation, Parik Group, Body First, Sejal Realty, Dot Shot, Zig Sports Studio, last but not the least, Edelweiss. Yes, we're going to be starting the match at 9:15 p.m. sharp on the dot. Yeah, they're almost through with their meal, the three umpires. Kaushik bhai, kon hase apna ball sade break ma? Okay, Aditya is ready.
159 to win this one. Remains to be seen whether it's going to be Aryan Patni. Yes, he's practicing. He's got his pads on, and is it going to be Sagar Uchil alongside him, or there is a change in batting guard? Remains to be seen. As far as the orange cap standings are concerned, Aryan is at the number 2 spot, 31 runs away from once again regaining the orange cap back. Sashwat on 397 after 7 matches. Aryan on to 367 after 6 matches. Sagar Uchil, who's his partner in crime, 6 matches, 240 runs. Yes, once again it's going to be the batting duo of Sagar Uchil and Aryan Patni to get onto the wicket. There you go. It's going to be the young left arm seamer Smith Shah to operate from the infinity end. Such a good prospect. If he is in good rhythm, he will pose a challenge or two to Aryan Patni and Sagar Uchil. Yes. Yes, I'm sure that team Super Kings would be wanting to ruffle the feathers here. They would like to dent the ego of Aryan Patni and Sagar Uchil. They are looking to make a match out of this. Tushar Uchil. It's going to be Sagar Uchil to be on strike. Aryan at the non-strikers end, and it's going to be Smith Shah all set for this second half to get underway. Not a mountain to climb, but definitely, but yes, a challenging ask. 159 to win this one. We all know that he is a very accomplished captain, Tushar Uchil. He will try and make a match out of this. It's playtime in this second half. Here we go. A good confident start for Sagar, bringing his bat down in quick time. He's got such a high back lift. So when that ball is rising onto him, he's in a good position to play that shot because he gets his bat to the ball in quick time. But when the ball is fuller in length, that is the time when he needs to get his bat down in quick time, and then it becomes a challenge. But he has quite an accomplished bat. He's been in good form, Sagar Uchil, one of the assets for Aryan Patni, no doubt about it. Aryan for the first time on strike, facing Smith Shah. आर्यन के बैट की एज लेना ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है. जिस तरह के फॉर्म में है आर्यन, अच्छी गेंद, थोड़ा सा जल्दी खेल लिया था, बहुत ही जल्दी अपने बल्ले के फेस को मोड़ा था. जब आप नई गेंद के साथ खेलते हो, पहली गेंद, तो स्ट्रेट बैट रखना थोड़ा सा जरूरी है. स्विंगिंग गेम. चलिए, अंपायर तो अपने लेफ्ट साइड चल पड़े थे. योगेश कांबले हमारे मेन अंपायर, अक्षय शेट्टी स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका अदा करते हुए.
गेटिंग सम गुड शेप. इसी तरह से गेंद को स्विंग कराना होगा. नई गेंद का सटीक इस्तेमाल करना है तो लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद को अंदर की तरफ लाना होगा. थोड़ी सी दिशा से भटके वाइड के रूप में एक एक्स्ट्रा रन प्राप्त हुआ. पटकी हुई गेंद. और मैंने पहले कहा था कि शॉर्ट पिच गेंद खेलने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हाई बैक लिफ्ट है. बिल्कुल सटीक समय पे बल्ला नीचे आता है. अच्छी पोजीशन में थे. एक बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्ट है स्मिथ शाह. लेफ्ट आर्मर्स की कमी है स्मिथ शाह और भावसर. इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है बतौर लेफ्ट आर्म सीमर्स. अच्छा प्रदर्शन किया है. बहुत ही बढ़िया टाइमिंग. बहुत ही बढ़िया शॉट. देखिए कितने सटीक तरीके से आर्यन अपने बल्ले को नीचे लाया और एन वक्त पर बल्ले के फेस को खोला. केवल दिशा दी ऑल अलोंग द ग्राउंड. हम ऐसा हमेशा मान के चलते कि चाहे वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हो या लेफ्ट आर्म सीमर हो, एक एडेड एडवांटेज होता है. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट स्मिथ शाह. स्ट्राइक पर सागर. बढ़िया शॉट. एफर्टलेस वन बाउंस क्रैशिंग इनटू द फेंस. जस्ट व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड. आत्मविश्वास भरा शॉट. स्विंगिंग डिलीवरी. थोड़ा सा लेट खेला. स्विंग को स्मॉदर किया, नेगेट किया, थ्रू द लाइन खेला विद अ स्टिल हेड. बहुत ही बढ़िया शॉट. निहायत ही खूबसूरत शॉट. ओवर की समाप्ति 9 रन बिना कोई नुकसान के. कृपेश भाई का भी हम स्वागत करते हुए 45 प्लस इवेंट की जोरदार तैयारी करते हुए कृपेश भाई. Nine for no loss at the end of the first over. Tushar to bowl from the in-orbit end. Nicely driven but straight to Pritpal at the edge of the circle in that extra cover region.
Badhiya again, it really gripped onto the surface, well bowled. Yes, it really must have hit a crack, bowling in the right area, a probing line consistently इसी जगह पर गेंद को लैंड कराना होगा. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए, बिल्कुल उजागर होकर अपनी रंगत में आते हुए गेंदबाजी करते हुए, प्रश्न चिन्ह पूछते हुए आर्यन पटनी से. शानदार शुरुआत तुषार उच्चिल के लिए. आर्यन के साथ ये होती है पार्टनरशिप, ये होता है पार्टनर का दायित्व. बहुत ही अच्छा ओवर करते हुए इस वक्त तुषार उच्चिल, बिल्कुल विंटेज तुषार उच्चिल इस वक्त नजर आता हुआ, प्रश्न चिन्ह पूछता हुआ लगातार, और वो भी आर्यन पटनी जैसे सक्षम बल्लेबाज से. ज्यादा फुल थी और अच्छी एफर्ट वहां पर मिकी मोदी की, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाए. 2 ओवर के बाद बिना कोई नुकसान के 11 रन, काफी परेशानी में डाला तुषार उच्चिल ने आर्यन को उस ओवर में, लेकिन भाग्यशाली रहे कि वहां पर अब भी डटे हुए हैं. आर्यन पटनी बिल्कुल वो विक्रमादित्य तीर है वॉरियर्स के तरकीश में, जिससे दुश्मन को धाराशायी किया जा सकता है. एक अलग किस्म की उनकी शानो शौकत है. वाकई में द हार्ट एंड सोल ऑफ द टीम आर्यन पटनी. We all love him, isn't it? Even the supporters of the Super Kings camp always want Aryan to succeed. Is that good a player? चले कैंप में नो का कॉल आया है. Yes, in comes Jugraj now. Yes, that flamboyant player with an X factor, Jugraj. Jugraj will have to be more consistent, will have to come up with better performances. This has been an ordinary tournament for Jugraj. He needs to pull up his socks. One minute. Please get your walkie-talkie on. Yogesh, get your walkie-talkie on. Yes, lots and lots is expected of a player like Jugraj. He's set himself high standards. This has been an ordinary campaign for Jugraj. So he'll have to pull up his socks. This is going to be a long season. He needs to come good. Not just this tournament, quite so many tournaments and events that Jugraj will feature in. The same goes for Tushar. Tushar, the batsman, did not blossom in this GST 2020, or else it would have been a different scene for Team Super Kings. Tushar Uchil is too good a player to be left out.
पहले इनिंग की हाइलाइट्स आपको देता हूं. 49 रन्स मिकी मोदी, स्मिथ शाह 26 रन्स, बाबा ने 4 विकेट्स लिए और एविन ने 2 विकेट लिए. ये हाइलाइट्स थी स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस पहले हाफ का. इस और ये मौका बना था, फ्री हिट थी. अच्छा शॉट था, फ्री फ्लोइंग और अच्छी फील्डिंग वहां पर. बहुत ही बढ़िया एफर्ट प्रितपाल का. 9 on 10 for that effort to Prithpal. The ball was traveling like a tracer bullet. Turning the face of the bat, giving that good delivery, the due respect, straight to Mickey. Well bowled. This is good bowling, slower through the air. Yes, mind you, all the youngsters, you got to try and beat the batsman in the flight. The slower you bowl through the air, it's going to be that much more challenging for the batsman to put you away for big runs. Yes, Sagar Uchil has been a damn good asset for Team Warriors. He's been so decent behind the wickets with the wicket-keeping gloves, and as the batter he has flourished. Time and again he has come up with those performances. देखिए स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला था तुषार सागर उच्चिल ने और तुरंत ही कॉल दिया नॉन स्ट्राइकर पर आर्यन ने कि वेट, यही होना चाहिए. स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलो तो नॉन स्ट्राइकिंग एंड वाला बल्लेबाज वो कॉल देता है यस के नो का, और वी में खेलते स्ट्रेट तो बैट्समैन कॉल लेता है. ज्यादा शॉट और गैप में खेला है. बवनीत बर्डी ने दौड़ लगाई, इसके पहले के गेंद विकेट कीपर के पास आए, बड़ी आसानी से दूसरा रन भी मुकम्मल किया. और एक गेंद आनी बाकी है इस ओवर में. इस वक्त रन संख्या 16 रन बिना कोई नुकसान के. इस इनिंग्स का तीसरा ओवर इस वक्त मार्गस्त, आखिरी गेंद आनी बाकी है. एक शांत शुरुआत यहां पर टीम वॉरियर्स के लिए, लेकिन ऑल विकेट्स इन हैंड, एक नींव रखते हुए एक अच्छी साझेदारी प्रस्तापित होती हुई. Yes, so Mohan Mittal is always a little extra noisy behind the stumps, quite a chirpy character. Prithpal Singh Baraj getting some quick attention from the physio. That ball that he tried to stop, that was really hit hard. Good work by Prithpal. This is brilliant bowling by Tushar. That was good running. So yes, it's going to be the brother to face his elder brother. The Uchil brothers up against each other.
श्रीमती बराज मैडम का मैं स्वागत करता हूं। बड़ी आसानी से वो रन मुकम्मल हुआ। 18 रन बिना कोई नुकसान के इस इनिंग्स का इस वक्त चौथा ओवर मार्गस्थ, 3 गेंदबाजी बाकी है। गेंदबाजी करते हुए इन ऑर्बिट एंड की तरफ से तुषार उच्चिल, स्ट्राइक पर आर्यन पटनी। टॉप क्लास क्रिकेट इस वक्त देखने को मिलता हुआ। दिस इज अ गुड कॉन्टेस्ट बिटवीन बैट एंड बॉल, मेकिंग लाइफ difficult for Aryan Patni, especially here. Tushar Uchil and company. A good attacking field is set for Aryan. They've blocked. That was a loose delivery, dispatched from sight with disdain. Just what the doctor ordered. Dot shot boundary takes the score to 22. The first loose delivery that Tushar bowled, and it was put away for 4 runs. That is the class of this man, Aryan Patni. Just a flick of the wrist by Aryan, not wanting to play with a dead bat. Just a flick of the wrist, a push, wanting to work it around into the gap. End of a decent over. 4 ओवर के बाद 22 रन बिना कोई नुकसान के। रिक्वायर्ड रन रेट 8.56, करंट रन रेट 5.50। इस वक्त आर्यन पटनी और सागर उच्चिल किसी भी तरह से उस रिक्वायर्ड रन रेट की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देंगे। काफी क्रिकेट खेलना बाकी है। गेंदबाजी का भार संभाले हुए जुगराज मेहता इन्फिनिटी एंड की तरफ से स्ट्राइक पर होंगे सागर उच्चिल। दोनों ही बल्लेबाजों ने 9 रन्स बनाए। सागर ने 12 गेंदों का सामना किया है और आर्यन पटनी ने 13 गेंदों का। दोनों ने एक एक चौका लगाया, तो बिल्कुल समांतर शुरुआत हुई है दोनों ही बल्लेबाजों के लिए। दोनों को 50-50% स्ट्राइक भी मिला है। चले, काफी क्रिकेट खेलना बाकी है। इस वक्त कुछ भी कह पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। खतरे से खाली नहीं है भविष्यवाणी करना। एक बहुत ही अच्छा क्रिकेट मैच इस वक्त मुकम्मल। बढ़िया कॉन्टेस्ट। देखिए, जब कभी गेंद को फ्लाइट कराता है जुगराज, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टर्न भी मिलता है जुगराज को। बढ़िया लाइन और बढ़िया लैंड, और ये जेनसन एलईडी लाइट्स विकेट गिरा है। सॉफ्ट मिसल, अच्छी गेंद। आमंत्रित किया था सागर उच्चिल को कि फ्रंट फुट पर आए, बड़ा शॉट खेले। यही इसे ही हम कहते हैं कि जाल बिछाना और जाल में फंसना। Yes, that is indeed big fish in the net. Yes, Jugraj is a happy man because it looks like he set himself. He set him up for that wicket. In walks Saket Adhikari. What a player Saket is. Huge experience, great potential. Very, very accomplished batter. An ideal number 3 batsman. Who better than Saket Adhikari? Just about the perfect number 3 batter.
It's a good catch taken by Chintan. जिस विकेट की खोज में थे वो विकेट मिली है. अब थोड़ा सा और प्रेशर बढ़ाना होगा, शिकंजा कसना होगा. टीम सुपर किंग्स एक ऐसी टीम है, अगर आप टीम सुपर किंग्स को थोड़ा सा भी लाइटली लोगे तो बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा. They will always keep you on your toes. And they have got a fantastic player in the form of Tushar Uchil to lead the team. स्मिथ को सर्कल में लाए हैं. तुषार सिंगल सेविंग पोजीशन पे. स्ट्राइक पर है साकेत अधिकारी. नए बल्लेबाज सामना करेंगे जुगराज का. एक बड़ी अहम जिम्मेवारी है साकेत के सक्षम कंधों पर. बहुत ही बढ़िया गेंद, ये बहुत ही अच्छी गेंद है नए बल्लेबाज को. फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा कि अंपायर्स ने इंसिस्ट किया है कि व्हाइट पैड्स न पहने बैटर्स. इट बिकम्स डिफिकल्ट टू गिव दोस डिसीजंस. Just once again putting my point across on behalf of the umpires that it would be great if the batters could wear those color pads. If we can just get those color clads onto the pads. Very short and superbly timed. What a shot there from Saket. Brilliant. That's a dot shot boundary. Getting into a good position. Not such a tall man, and they say that square cut, if somebody is not that tall, he's an ideal batter to play those square drives and square cuts. Very strong squarish off the wicket Saket Adhikari. स्क्वायर कट की बात करें तो सीधे सीधा अपने हमारे जहन में गुंडप्पा विश्वनाथ ये नाम आता है. वेल बोल. ये गेंद लगातार करनी है. कितना ज्यादा बाहर आ चुके थे साकेत. अच्छी गेंद. 5 ओवर्स के बाद 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर. Gundappa Vishwanath had made that square cut shot his very own. No better than Gundappa Vishwanath to play that square cut. And then it was taken forward by, in the modern day age, by Virendra Sehwag, who was so great squarish off the wicket. Virendra Sehwag. तो अब जो स्क्वायर कट के अगर स्पेशलिस्ट को देखें तो दे हैव नॉट बीन वेरी टॉल. दे हैव बीन प्लेयर्स विद शॉर्ट हाइट और मैक्सिमम एवरेज हाइट. दे हैव नॉट बीन टू टॉल. ऐसा कहते हैं कि एवरेज हाइट या थोड़े से शॉर्ट बल्लेबाज हो तो स्क्वायर कट उनके लिए ज्यादा आसान होती है. और अगर कोई बल्लेबाज थोड़ा सा लंबे कद का है, थोड़ा सा टॉल है, मोर देन एवरेज, तो उसके लिए ड्राइव शॉट्स काफी इजी होते हैं, ऐसा माना जाता है. देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस. और विकेट कीपर भी अगर कहते हैं कि थोड़ा सा शॉर्ट या थोड़ी सी कम कद का हो तो वो एक एडवांटेज होता है विकेट कीपर के लिए. लेकिन वी हैव सीन क्वाइट अ फ्यू एक्सेप्शंस एट द इंटरनेशनल लेवल. एडम गिलक्रिस्ट द बिगेस्ट एक्सेप्शन. ही वाज मोर देन 6'3", 6'4". In spite of that, he was a brilliant wicketkeeper batsman. इंडिया की बात करें तो सैयद किरवानी का हाइट एवरेज थी, लेकिन सदानंद विश्वनाथ was quite tall. चंद्रकांत पंडित कहो, किरण मोरे कहो, they were quite short, less than average height.
एलन नॉट की बात करें, not that tall, one of the finest wicket keepers that the world cricket stage has ever seen, Alan Knott. So it is an advantage as a wicket keeper if you are not that tall. You can come down in quick time. That is what they say. And there are always exceptions. And even as a batter, if you are slightly small, advantage for you to play those cut shots. Uchil to continue. He is in such good rhythm, and it is great that when Tushar Uchil is bowling, if Aryan Patni can be at the non-strikers, and that will really be a good thing for Aryan, for Team Warriors. Aryan is slightly struggling against Tushar Uchil tonight. He is making the ball talk here. The ball is hissing like a cobra. Brilliant man. अब क्या कहे इतनी शानदार गेंदबाजी को, किस तरह से हम शब्दों में बयां करें. निहायत ही खूबसूरत गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया. ज्यादा फूल थी. That was a half volley. This is brilliant bowling by Tushar Uchil. What a spell. He's into his third over. He has given away just 10 runs. And he has beaten the batsman in the flight. That was fired in, that came in with the arm, the ball keeping slightly low, but in no discomfort there. Aryan Patni playing it so well, nicely played. Yes, he will go through the grind, थोड़ा सा संघर्ष करते हुए, but देखिए वो विकेट नहीं फेंकेंगे, वो विकेट पे डटे रहेंगे. आर्यन को पता है कि एक आधी लूज गेंद, एक दो चौके लगेंगे तो फॉर्म फिर से एक बार बरकरार होगा, तो विकेट नहीं फेंकेंगे. ही विल स्टे पुट एट द ग्राउंड. ही नीड्स टू गो थ्रू द ग्राइंड समटाइम्स, सो यू कैन नॉट थ्रो इट अवे. संघर्ष कीजिए, डटे रहे, एंड रन्स विल कम इन. तुषार के 3 ओवर समाप्त हो चुके. शायद ये कश्मकश में होंगे तुषार के, मैं मेरा स्पेल खत्म करूं या मेरे 1 ओवर को मैं बाकी रखूं, क्योंकि थोड़ा सा संघर्ष कर रहे इस वक्त आर्यन पटनी. मे बी दैट विल प्रॉम्प्ट तुषार उचिल टू बोल दैट फाइनल ओवर. मे बी इट्स अ 50-50 कॉल. 30 for 1 एट द एंड ऑफ 6 ओवर्स. फिर से एक बार YouTube के हमारे सभी श्रोताओं का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं. ये मैच नंबर 26 है. कुल मिला के 32 मैचेस होंगे इस टूर्नामेंट के दरमियान. अब लगातार मैचेस, मंडे को सिर्फ हमारा मेंटेनेंस डे होने की वजह से रेस्ट डे होगा. अदरवाइज दिस मैच विल बी ऑन एट ऑल टाइम्स. मे बी वी हैव वन ब्रेक बिफोर द ग्रैंड फिनाले. जुगराज को एक सफलता हाथ लगी है. 2 ओवर्स में 8 रन दिए गेंदबाजी करते हुए आर्यन पटनी. यश गाडिया ने बताया था मिड इनिंग्स ब्रेक में कि the battle between माफ कीजिएगा, जुगराज एंड आर्यन will be interesting to watch, and here it is, जुगराज to आर्यन. पता नहीं शायद नीक थी या नहीं, you never know.
शायद निक थी, जिस तरह से तुषार ने रिएक्ट किया है, शायद देयर वाज अ निक इन इट। मौका टपका है। बहुत ही अच्छी गेंद और रुक कर अपने शॉट को खेला ऑल अलोंग द ग्राउंड। गुड बैटिंग। दिस इज अ गुड कॉन्टेस्ट। बहुत ही शानदार क्रिकेट इस वक्त दर्शाते हुए दोनों ही टीम्स। बढ़िया क्रिकेट, फाइटिंग क्रिकेट। डॉट शॉट बाउंड्री। साधारण फील्डिंग थोड़ी सी इतना आसान नहीं होता है बाउंड्री लाइन पर वहां पर फील्ड करना। 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर जुगराज आर्यन को गेंदबाजी करते हुए। बहुत ही ज्यादा वाइड, काफी शॉर्ट और काफी वाइड, वेस्टेड डिलीवरी। 35। अच्छा लीव। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। सात ओवर के बाद 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शायद अपने स्पेल का आखिरी ओवर, शायद। चलिए गेंद थमाई है। पहले कहा था 50-50 कॉल है। भावनित बर्डी को गेंदबाजी में इंट्रोड्यूस किया है। इन ऑर्बिट 10 की तरफ से लेग स्पिन गेंदबाजी करते हैं। क्वेश्चन पेपर टफ आ गया। भावनित सर आ गया तो टफ आ गया क्वेश्चन पेपर। लास्ट ईयर टाइम पे वो नॉट आउट का कॉल हो गया, लेकिन दैट इज अ टफ कॉल। लेग स्टंप से मिडल स्टंप में आता है बॉल मिलता है। बहुत ही बढ़िया गेंद। अगर भावनित बिल्कुल अपने पोटेंशियल के अनुसार गेंदबाजी करते तो शायद प्रेशर बना रहेगा। एज अ लेग स्पिनर अगर आप बिल्कुल रंगत में आके गेंदबाजी करते हो तो बड़ा चैलेंजिंग होगा। लेग स्पिनर के लिए वो बिल्कुल डिसेंट लाइन और लेंथ गेंदबाजी करना थोड़ा सा एक्स्ट्रा चैलेंजिंग होता है। सो विल ही कम अप विद द गुड्स इज द बिग क्वेश्चन या भावनित। काफी शॉट
गैप में खेला है। आयुष ने पूरी तरह से अपनी रीच का फायदा उठाया। अच्छी फील्डिंग। 39 रन 1 विकेट के नुकसान पर इस इनिंग्स का 8वां ओवर इस वक्त मार्गस्थ है। 3 गेंद आनी बाकी है। स्ट्राइक पर है साकित। बहुत ही ज्यादा शॉट। रन संख्या थमी हुई 39 रनों पर। अब तक अच्छी तरह से बांधे रखने में कामयाब हुए सुपर किंग्स के गेंदबाज। अच्छा एफर्ट है सुपर किंग्स का। सुपर किंग्स बनाम वॉरियर्स। जैसे ही वो गेंद मिकी मोदी के बगल से निकली, there was a boundary written all over it in bold letters. That's a dot shot boundary, just what the doctor ordered for team Warriors. That will really make him feel good. A good connection. He's been struggling slightly tonight, but it's great to see that he's throwing it. He's not throwing it away. He's trying to fight. He's going to the grind. This is the character of the batsman. Any other lesser batsman in this kind, in this time when he's struggling, would have been prompted to hit his way out of trouble, but not Aryan Patni. It is very easy to hit your way out of trouble, isn't it? You try to hit your way, you get out, or you put a big shot. But Aryan is going to the grind. He knows that if he stays at the wicket, this match will be over sooner than later. He knows it. Any batsman could struggle at some stage or the other, isn't it? But the key is to fight all odds, stay at the wicket and take your team to that winning post. That is what the champion player is made up of. When the going gets tough, the tough get going. So this is the great character that he has got in him being brought out. This is a big opportunity for Saket Adhikari as well to show his potential. Usually experienced. Mickey to Adhikari. मिकी मोदी हमेशा हमें विद दैट कस्टमरी हेडबैंड बियॉन्ड बॉर्ग की याद दिलाते हैं, दैट लेजेंडरी टेनिस प्लेयर. What a player Borg was, isn't it? Legendary tennis players Bjorn Borg, John McEnroe, Stefan Edberg, Mats Wilander, Boris Becker, Goran Ivanisevic, Stefan Edberg, Ivan Lendl, all legends, great tennis players. Pete Sampras.
Yes, Aryan has been challenged tonight, but is really living up to the expectations of being a great steely character. Yes, he's got nerves of steel. Aryan Patni, very strong mentally. He knows his game in and out. He reads the match situation to perfection. अपनी टीम की नैया पार लगाते हुए आर्यन पटनी 47 रन एक विकेट के नुकसान पर रिक्वायर्ड रन रेट 9.88. बैकफ्लिप. यस, मोहम्मद अजहरुद्दीन ने उस बैकफ्लिप को स्टार्ट किया था. देन महेंद्र सिंह धोनी मेड इट हिज ओन इन दैट विकेट कीपिंग पोजीशन. यस, अजहरुद्दीन वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स दैट वी हैव एवर सीन. ग्रेट रिफ्लेक्सेस, ग्रेट एंटिसिपेशन. अजहरुद्दीन द नवाब ऑफ हैदराबाद. यस, अजहरुद्दीन को बतौर फील्डर हम लोगों ने बहुत ही कम देखा डाइव करते हुए टू हिज लेफ्ट और राइट, लेकिन जिस तरह से गेंद को एंटिसिपेट करते थे और जिस तरह से गेंद को कलेक्ट करके थ्रो करते थे, ही वाज टू गुड अजहर. यस, इस ओवर के बाद ड्रिंक्स इंटरवल होगा. जॉन्टी रोड्स, व्हाट एन इलेक्ट्रीफाइंग फील्डर. वो जो 5 कैचेस जॉन्टी रोड्स ने ब्रेबॉर्न स्टेडियम पे लिए थे, वो आज भी हम सभी की जहन में उतने ही ताजे हैं. जॉन्टी रोड्स ने फील्डिंग के स्तर को बिल्कुल एक अलग लेवल पर ले गए. Yes, we have got that wonderful outfielder Ravindra Jadeja. At this moment, he is the best all-round fielder. He's got the best throwing arm. We had Robin Singh in that point region in the earlier days. Mohammad Kaif, brilliant fielders. Yuvraj Singh, not to forget him. Suresh Raina. Virat is a good fielder, not a great fielder. He can be very good at times, but not in that league of great fielders. Herschel Gibbs. Nawab of Patodi was a brilliant fielder in that extra cover region. He was like a tiger. इसकी वजह से उन्हें टाइगर पटौडी कहते थे. Eknath Solkar in that closing position, forward short leg पे. He's taken unbelievable catches. और जब वो स्पिन क्वार्टेट गेंदबाजी करता था, बिशन सिंह बेदी, प्रसन्ना, चंद्रशेखर और वेंकट राघवन, ये 4 जन जब गेंदबाजी करते थे बिल्कुल उनके हेड एज में, तो फॉरवर्ड शॉट लेग पर एकनाथ सोलकर ने काफी विकेट्स दिलाए इन सभी दिग्गज गेंदबाजों को. रिक्वायर्ड रन रेट 10.22, 50 runs on the board. What a shot, hand handsome, up she goes, away she goes, on to the rooftop, party group 6, just what the doctor ordered. Yes, 1 or 2 good shots and the vintage Aryan Patni will be seen.
56 for 1. Ajay Jadeja was such a good fielder. Rahul Dravid, yes, wonderful catcher in the sleeps. Yes, India has not managed to produce those brilliant sleep fielders just the way Australia and England have produced the South Africans. India has not been that good in the sleep cordon. But yes, Rohit Sharma has taken some fabulous catches in the sleeps, even Virat Kohli. Rahul Dravid, 200 plus catches, yes. What a man, what a player, Rahul Dravid. Nicely timed into the gap. Pritpal Singh Barrage in the deep. Good piece of work there. 2 runs nicely taken. Yes, देखिए सौरव गांगुली, Rahul Dravid and VVS Lakshman, they are involved with Indian cricket in a big way. सौरव गांगुली अब BCCI के नहीं है लेकिन associated थे. Yes, still very active. Rahul Dravid, coach of the national team. VVS Lakshman, the coach of the under-19 and the India A teams, is the head at the NCA. VVS Lakshman. Yes, so a terrific setup है. Only Sachin Tendulkar is not into cricket administration and not into coaching or anything. Yes, उनकी academy चल रही है, especially DY Patil में, yes, but is not involved that actively with Indian cricket. 59 for 1. It's rings time. The score at the end of 10 overs is 59 for 1. $60 for 1. Yes, so we had one more brilliant fielder from Hyderabad, Noel David. If you all can remember him, Noel David, specialist in that point and cover region. चले एक बेस्ट फील्डर्स का लिस्ट रीड करता हूं आपके सामने. जॉन्टी रोड्स साउथ अफ्रीका, सुरेश रैना इंडिया, हर्षल गिब्स साउथ अफ्रीका, AB डिविलियर्स साउथ अफ्रीका, रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया, पॉल कॉलिंगवुड इंग्लैंड, एंड्रू साइमंस ऑस्ट्रेलिया, रविंद्र जडेजा इंडिया, स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया,
Duplessis, South Africa, Dwayne Bravo, Trinidad and Tobago, Mohammad Kef, Glenn Maxwell, Virat Kohli, Brandon McCullum. ये नेट पे लिस्ट है, the top 15 fielders. Debatable list है. अजहरुद्दीन का नाम नहीं है क्योंकि he never felt the need to dive, to his left or right because उसका anticipation इतना अच्छा था, reflexes इतने अच्छे थे, वो पिकअप इतना अच्छा था, नाइस एंड इजी पिकअप, तो डाइव मारने की कम जरूरत पड़ती थी. So that list is quite debatable. अलग-अलग options है, yes, but yes, some great fielders in that list. Brian Macmillan, South African, that tall guy. He was a teacher. और क्या catches लेते थे स्लिप. He almost had bucket ends. 60 for 1. Mickey to Saket. Required run rate 9.5. Yes, making good use of the depth of the crease, Saket. 9.90 the required run rate. Saket Adhikari on to 12 of 17 balls. Aryan on to 33. That means he has already got that orange cap back on his head. He becomes the number one batter in this tournament. He was 31 runs away from the orange cap. He's got it. जब तक आर्यन विकेट पे है खतरा मंडराता रहेगा, ये कहने की भी कोई जरूरत नहीं है. वॉरियर्स बनाम सुपर किंग्स, एक बहुत ही तगड़ा मुकाबला इस वक्त मार्गस्थ है. And he gets his man. That's a Jensen LED lights wicket. आर्यन पटनी पेविलियन में वापस आते हुए और जश्न मनाती हुई टीम सुपर किंग्स. दिस इज बिग फिश इन द नेट. मिकी मोदी को रोकना आज मुश्किल है. आज की शाम मिकी मोदी के नाम. The third umpire has asked us to wait. He's looking at that foot. So yes, let him go through the... कुलदीप पाजी को भी एक अलग किस्म का इंटरेस्ट जागा है.
यस, आज हम लोगों ने फील्डर्स की बात की है इंटरनेशनल लेवल पर। कल के मैच में हम थोड़े से इस जीएससी के फील्डर्स के बारे में भी बातचीत करेंगे। कल क्यों, आज ही देख लेते। फील्डर्स की बात करें तो दक्ष अग्रवाल ने 7 कैचेस लिए हैं। मोहन मित्तल ने बिहाइंड द स्टंप्स 6 डिसमिसल्स इफेक्ट किए हैं। राघव ने बिहाइंड द स्टंप्स 6 डिसमिसल्स। आर्यन पटनी ने 4 कैचेस लिए हैं। विक्रम पंजवानी ने 4 कैचेस। तो ये फील्डर्स के स्टैंडिंग्स में दक्ष, he lives to fight another day. So it will just not be a not out, but it will also be a free hit. Yeah, he lives to fight another day, Aryan Patni. 4 balls to go. Yes, हमारे ग्राउंड्समैन थोड़ा सा लाइन मार्किंग करना होगा, तैयार रहे ग्राउंड्समैन मोती भाई। White ball, free hit will continue.
बेहतरीन टाइमिंग, ये जबरदस्त पारी ग्रुप छक्का. This is like putting salt on the injury. जले पे नमक छेड़ने जैसा है ये. Nicely by प्रितपाल. और 2 छक्के के साथ आर्यन पटनी जा पहुंचे हैं 45 रनों पर. नजाकत से खेला है, गैप में खेला है. दूसरा रन बड़ी आसानी से मुकम्मल किया. चिंतन शाह का वो थ्रो 77 रन से 1 विकेट के नुकसान पर. करंट रन रेट 6.90, रिक्वायर्ड रन रेट 9.28. भावनित बर्डी गेंदबाजी करते हुए साकेत को. बढ़िया टाइमिंग, खुलकर खेला, आक्रामक रंग पेश किया. पारे ग्रुप छक्का. 83. साकेत अधिकारी joining the party. That required run rate has now come to less than 9 and over. This is good batting here by Team Warriors. 8.77 straight away under 9. Both the batters are now well set. Oh, that was a loose delivery. That should have gone over the Goregaon Sports Club signboard. 84. Only a single added.
Yes, no, but no. Aryan is swift. देखिए what Saket did good here was that he said firmly no. He stood his ground and he had to go back. Very, very wide. That's a dot shot boundary. Runs coming in thick and fast. The shoulders starting to drop for Team Super Kings. 90 for 1. One more ball to come in this 12th over. Required run rate 8.45 with 9 wickets in hand. Getting some stick in this over, Bhavnit. एंड ऑफ द ओवर 12 ओवर के बाद 90 रन 1 विकेट के नुकसान पर. जुगराज गेंदबाजी का भार संभाले हुए अपने स्पेल का आखिरी ओवर लेकर इन्फिनिटी एंड की तरफ से स्ट्राइक पर आर्यन पटनी. आर्यन पटनी इस वक्त 46 रनों पर खेलते हुए 46. अब क्योंकि एक मौका मिला है, लाइफ मिली है आर्यन को, ही विल नॉट लेट इट गो अवे. स्मिथ शाह डीप में. Driven into the gap, they have gone for that second one. Good running, good initiative taken by Saket. That call was from Saket to go for that second run. He was running to the danger and in the end accomplishing that second run quite easily, safely back home. No harm done. 94 for 1. That's the 50 up for Aryan Patni. संघर्ष कर रहे थे लेकिन देखिए क्योंकि उन्होंने अपनी विकेट नहीं फेंकी, ही डिड नॉट ट्राई टू हिट हिज वे आउट ऑफ ट्रबल. इस बात को ध्यान में रखे, पिक अ लिफ आउट ऑफ हिज बुक. ऑल द यंगस्टर्स, नेवर थ्रो योर विकेट अवे. डू नॉट ट्राई टू हिट योर वे आउट ऑफ ट्रबल. दैट इज लाइक टेकिंग अ शॉर्टकट टू हिट योर वे आउट ऑफ ट्रबल.
Not Aryan, he stood his ground. Saket Adhikari is now playing quite freely. He is now relatively set. This is a good match-winning partnership here by Saket and Aryan for Team Warriors. Some cricket left to be played in this match. 8.79 is the asking run rate. At one stage it had gone up to more than 10.5. He's looking very, very comfortable now at the wicket. 97 for 1 at the end of 13 overs. At the same stage, team Super Kings were 100 for 3. Yes, it is Happy who has gone on to the wicket with the drinks, and yes, he will give his piece of advice. Continue in the same vein. Keep going. Do not throw it away. आप लोग दोनों को ही ये लक्ष्य तय करना है. That will be the message from Happy. बहुत सारे मैचेस में हैप्पी को 12th मैन की भूमिका अदा करने के लिए कहा गया है, लेकिन he has been quite sporty. He has still been involved, and that is why I always keep saying that Happy is such a good sportsman. The man with the golden arm being introduced from the in-orbit end, it is Pritpal Singh Baraj. Yes, उनके तरकीश में ये आखिरी हुक्मी इक्का प्रितपाल के रूप में. हम सभी जानते हैं कि प्रितपाल अगर बिल्कुल उजागर होकर गेंदबाजी करेंगे बिल्कुल अपने पोटेंशियल के अनुसार, तो ही कैन बी क्वाइट चैलेंजिंग. बहुत ही ज्यादा शॉर्ट गेंद, सही दिशा में उस गेंद को पहुंचाया आर्यन पटनी ने. पारी ग्रुप छक्का. दिस इज ब्रेड एंड बटर. दैट वाज अ लूजनर. 100 रन्स अप ऑन द बोर्ड. 103. चलिए, अब तो एक बहुत ही बढ़िया सटीक लॉन्चिंग पैड अब प्रस्तापित हो चुका है. वॉरियर्स के खेमे में से अब चलिए थोड़ा सा शोर होता हुआ. बढ़िया टाइमिंग, कड़ाई के सहारे मोड़ दिया राउंड द कॉर्नर. कोई भी फील्डर वहां पर मौजूद न था. थोड़े से दिशा से भटके थे, केवल गाइड किया. 4 रन मिले. डॉट शॉट चौका. 108 रन. चलिए, अब रिक्वायर्ड रन रेट 8 से भी नीचे आ चुकी है. 4 ओवर्स के पहले वो रिक्वायर्ड रन रेट 10.85 थी. 4 ओवर्स के बाद ये रन नेट रिक्वायर्ड रन रेट 7.85 पर आ चुकी है.
इतना बड़ा फर्क। प्रितपाल के इस ओवर में और 2 गेंद आनी बाकी है। बहुत ही प्रेशर सिचुएशन में गेंदबाजी करने के लिए उतारा है प्रितपाल को, बहुत ही ज्यादा अनुभवी है। तुषार उच्चील के लिए आखिरी उम्मीद की किरण थी। युवराज वन 1-0 एट द एंड ऑफ 14। 1 विकेट के नुकसान पर 110 रन। 36 गेंदों में 49 रन बनाने होंगे। नॉट अ माउंटेन टू क्लाइंब। 36 balls and 49 runs to win the match with 9 wickets in hand. Both these batsmen looking so good, and it's going to be Ayush Agarwal to be brought into the attack. The tall and lanky seam bowler Ayush. The last season in most of the matches he bowled with the new ball, but not this season. He's been brought on to bowl with that semi-new ball. A good all-rounder. Fighting against all odds to bring his team back in the match. Ayush Agarwal, a big challenge on his shoulders to get his team back in the match. They'll have to fight all odds here. वापसी का रास्ता खोजना होगा सुपर किंग्स ने। दुआओं के काफिले को साथ ले चलना होगा। सुपर किंग्स के लिए ये कैंपेन जीएससी 2020 के दरमियान बहुत ही साधारण रहा है। They have not lived up to the tag of being one of the better teams. In comes the owner of team Super Kings, Amardeep Singh Bharaj. Ayush Agarwal to bowl from the infinity, and it's Aryan on strike. Once again defying all odds, all logic. That sanity word is not there when Aryan Patni comes on to bat. He can be insanely consistent. Aryan Patni, so strong in the mind. The standout player, just like the last season, this season too, he is making his own. He's been given the added responsibility of being the captain, and he's really liked this opportunity. The ball keeping low. थोड़ा पिछली खेला, कुछ समय तक दिल हलक में था, लेकिन काफी शॉर्ट था, लेकिन गेंद निकली डॉट शॉट चौके के लिए।
कम से कम उस चौके को रोकना चाहिए था। कैच लेने का तो कोई सवाल ही नहीं था, हाफ चांस भी नहीं था। सेकंड के साथ रन संख्या 116 रनों पर 7.82 रिक्वायर्ड रन रेट, लेस देन 8 इन ओवर, कोई चिंता की बात नहीं। 9 विकेट्स हाथों में है। ये मैच विनिंग पार्टनरशिप हुई है साकेत और आर्यन के बीच। साकेत की भी तारीफ करनी होगी। एट द स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स ही वाज स्लाइटली टेंटेटिव, बट यस, ही गेव गुड कंपनी। What a shot! Inside out shot, well struck, good timing, dot shot boundary, on to 120, Saket on to 37. This is a big contribution by Saket, and this is a good sign here for Team Warriors that Saket is looking good. It's absolutely a must that the top order batsmen get some good practice under the belt and they start to pick at the right time. वॉरियर्स के लिए ये आखिरी लीग मैच है, 7वां मैच खेलती हुई। हर टीम को 7 लीग मैचेस खेलने का अवसर प्राप्त होता हुआ इस जीएससी 2020 में। काफी लंबे अरसे तक चलने वाला ये जीएससी 2020, और इस तरह के लंबे टूर्नामेंट में मोमेंटम और फॉर्म बरकरार रखना वाकई में एक बड़ी चुनौती होती है, और इस चुनौती में बिल्कुल खरे उतरे आर्यन पटनी और उनकी टीम वॉरियर्स। बड़ा शॉट लगाना चाहता, मिस कर गए। चलिए 15 ओवर के बाद 121 रन, 1 विकेट के नुकसान पर अब 30 गेंदों में केवल और 38 रनों की दरकार। आसान सा लक्ष्य, इस मैच में बने रहना है तो कम से कम 2 या 3 विकेट्स बहुत ही जल्द लेने होंगे सुपर किंग्स ने। तुषार उच्चिल अपने स्पेल का आखिरी ओवर लेकर sensible batting by Saket, yes.
बिल्कुल मन बनाया है कि हम ही दो बल्लेबाज अपनी टीम को जीत के उस पार ले जाएंगे। सटीक सोच, बढ़िया इनिंग्स ये साकेत अधिकारी की, जबरदस्त इनिंग्स, बड़ा योगदान किया है आज की शाम। बहुत ही ज्यादा शॉट, अच्छा एफर्ट मिकी का। That will be a chase in vain. Dot short boundary. 5 runs added in the form of wide runs. Welcome runs to team Warriors. The score now on to 128 for 1. We're into the 16th over. 31 to win off 28 balls. This should be a cakewalk now for team Warriors. Yes, so worked away. 2 balls to come in this 16th over. 130 for 1. 26 balls and 29 to win. Tossing the ball up. Almost a half volley driven downtown. The scoreboard ticking in the form of singles in this over from Tushar, not wanting to take any unwarranted risk. All the more when Tushar Uchil is into his final over. Trying to play on merit, treat the bowling on merit. Quite the right thing to do. 131 for 1. बहुत ही ज्यादा स्विफ्ट आर्यन, बहुत ही तेजी से पहला रन लिया था जिसकी वजह से बिल्कुल बड़ी आसानी से दूसरा रन भी मुकम्मल किया। 16 ओवर के बाद 133 रन, केवल एक ही विकेट के नुकसान पर। रिक्वायर्ड रन रेट केवल 6.50, 24 गेंदों में केवल और 26 रन बनाने और अपने स्पेल को बरकरार रखेंगे आयुष। वेलकम मैच टीम ग्लैडिएटर्स बनाम टीम गैंगस्टर्स। 6:30 को टॉस टाइम, गैंगस्टर्स वर्सेस ग्लैडिएटर्स। गैंगस्टर्स जो परिस्थिति में आज टीम वॉरियर्स है, वही परिस्थिति में कल टीम गैंगस्टर्स होगी ग्लैडिएटर्स के खिलाफ। ग्लैडिएटर्स का सफर समाप्त हो चुका है, जिस तरह से सुपर किंग्स का सफर समाप्त हुआ, जिस तरह वॉरियर्स को आज का मैच जीतकर वो 10 अंक हासिल करने जरूरी है, उसी तरह से कल के दिन गैंगस्टर्स के लिए भी यही इक्वेशन होगा। मैच जीतकर 10 अंक हासिल करने और नेट रन रेट का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बिल्कुल समांतर स्थिति में इस वक्त गैंगस्टर्स और वॉरियर्स। देखना है कि कल गैंगस्टर्स किस तरह से खेलती है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। अच्छी गेंद, गति में परिवर्तन, थोड़ा सा जल्दी खेल लिया अपने शॉट को, भाग्यशाली रहे। गेंद नो मैंस लैंड में गिरी। साकेत जा पहुंचे हैं 42 रनों पर।
साकेत के पास भी ये मौका है आज के अपना इस GST 2020 का इस साल का पहला अर्धशतक से काफी नजदीक है और कप्तान चाहेंगे कि ये हाफ सेंचुरी हो साकेत की। चले ये तो गेंद चली, पारी ग्रुप छक्का, क्या टाइमिंग, फ्लैट 6, 140 रन, 22 गेंदों में 19 रन। मेरे ख्याल में अब तो केवल औपचारिकता बाकी। द राइटिंग ऑन द वॉल, बड़ी तेजी से जीत के लक्ष्य की तरफ पहुंच चुकी है टीम वॉरियर्स, जीत के दरवाजे पर दस्तक देती हुई, ऑलमोस्ट एट द विनिंग पोस्ट। 9 wickets in hand and only 19 runs to win now. Deft touch. Jugraj there in the deep. 2 runs nicely taken, 142. 21 गेंदों में केवल और 17 रनों की दरकार। एक बड़ी जीत इस वक्त प्रतीक्षा करती हुई टीम वॉरियर्स की। जस्ट व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड फॉर टीम वॉरियर्स। शायद नंबर 1 पोजीशन में जा पहुंचेगी इस जीत के बाद। देखना होगा, टेबल, पॉइंट्स टेबल इंटरेस्टिंग होगा। मोहन मित्तल ने दौड़ लगाई है, तीसरा रन भी शायद मिलेगा क्योंकि वो थ्रो कलेक्ट करने के लिए कोई भी नहीं है वहां पर। 3 रन्स मुकम्मल किए। 145। चलिए अब राइटिंग इज देयर ऑन द वॉल, जस्ट गोइंग थ्रू द मोशंस नाउ, केवल औपचारिकता बाकी है। अब बिल्कुल ये सुनिश्चित हो चुका है कि ऐसे हालात में अब केवल एक ही टीम इस मैच को जीत सकती है और वो है टीम वॉरियर्स। देखना होगा कि नंबर 1 के स्थान पर पहुंचती है या नहीं टीम वॉरियर्स। शायद, मेरे ख्याल में शायद पहुंच सकती है, नॉट टू श्योर। साकेत अगर आज हाफ सेंचुरी मुकम्मल करते तो अगले मैच में एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ उतरेंगे। देखना है कि आर्यन अब किस तरह से इस बात के बारे में सोचते हैं, क्या वो स्ट्राइक देते हैं या खुद ही मैच खत्म करते हैं। चलिए अब वो रुकने वाले नहीं है, इज गोइंग विद द फ्लो। 17 के बाद 147, 12 रन्स टू विन ऑफ 18 बॉल्स। यस, मुश्किल होगा शायद नंबर 1 पर आने के लिए, चांस ही नहीं है शायद, पता नहीं, लेकिन 10 अंक लेकर टॉप 2 में तो पहुंच जाएगी। यस, ब्लास्टर्स के पास एक आउटसाइड चांस है, शायद वो करिश्मा हो जाए, कुछ एरिथमेटिक अलग किस्म का हो जाए। A very slim chance for Blasters, but you cannot count them out 100%, isn't it, Happy? Anything can happen, bhai. Chale, Ashay comes in as a substitute. He comes in place of Chintan.
चैलेंजर्स तो एक या दो स्थान पर होगी ही, नंबर 1 या नंबर 2 फाइट होगी राइडर्स, वॉरियर्स और गैंगस्टर्स के बीच कि कौन सी टीम वो टॉप 2 में 3 में से कौन सी एक टीम आती है। क्वालिफाई तो ये तीन ही टीम्स कर जाएगी, चैलेंजर्स, राइडर्स, वॉरियर्स, गैंगस्टर्स। ऑलमोस्ट 90% सुनिश्चित हो गया टॉप 4 में। ब्लास्टर्स शायद कुड रफल द फेदर्स, यू नो, योर पॉइंट्स टेबल में कुछ दे कैन गेट इनटू द स्कीम ऑफ थिंग्स। ब्लास्टर्स आउटसाइड चांस, स्लिम चांस। केवल एक चमत्कार ही ब्लास्टर्स को टॉप 4 में ले जा सकता है। स्मिथ शाह, क्या शॉट, जबरदस्त, टेरिफिक शॉट मैन। It is Shubhankar to bowl from the in-orbit end. चलिए अब ऐसी स्थिति आ गई है कि शायद साकेत की वो हाफ सेंचुरी नहीं होगी और आर्यन भी अपनी सेंचुरी तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन ये जीत ज्यादा मायने रखती है, इंडिविजुअल ग्लोरी तो सवाल ही नहीं। थोड़ा सा नेट रन रेट को ध्यान में रखते हुए इस मैच को अपने निर्धारित समय के पहले समाप्त करना चाहते हुए तो इसकी तगड़ा टाइमिंग, टच शॉट चौका, 157 को केवल और 2 रनों की दरकार। आर्यन पटनी ऑन टू 85। स्टैंड आउट इनिंग्स देखिए, शुरुआत में संघर्ष कर रहे थे, बिल्कुल फॉर्म में नहीं लग रहे थे शुरुआत में, लेकिन विकेट नहीं फेंका, रुके रहे, डटे रहे, फलस्वरूप 85 रनों की एक बेहतरीन इनिंग्स। Yes, those could be. That is the winning shot, dot shot boundary. बोला जो उन्होंने सुन लो, रिकअप जैन रजनीश बोला कि ललित बोला? ललित बीच ना, ललित भाई, रजनीश बस क्या सर, ये ऑरेंज पर्पल, हाँ हाँ पता है मेरे को, ये रजनीश विच और रिकअप जैन मैन ऑफ द मैच देंगे। पर्पल इज बॉलर ना, पर्पल कैप देंगे गौरव तलवार। पर्पल इज बॉलर ना, हाँ, सो बॉलिंग पे पहुंचा है सौरभ सर, माइक चल रहा है। हाँ हाँ ठीक है, बंद ही है। हेलो।
Yes, good evening and welcome to the post-match prize distribution. May I request both the teams and all the supporters to please get in front of the dais to do the honors. May I invite Rikab Jain, Gaurav Talwar, Prasad Karkera and Vij Rajnish to please step onto the stage alongside Karan Singh Walia. Yes, a big thank you to the umpires, Yogesh Kamble, Akshay Shetty and Kiran Purandare. Thank you to the groundsmen for the wonderful job. Thank you to our physio. Thank you to Pramod Bhai Kashyap and his coverage team. Thank you to all the fans and supporters gathered in good numbers. Hello. May I also request Gopal Butla to please come up on stage. Yes, Gopal Butla, you need to come up on stage. Gopal Butla. Gopal, you need to be on stage. Yes, welcome to the prize distribution ceremony. To do the honors of the prize distribution, I have got with me alongside Karan Singh Wali, I've got Rikab Jain, Gaurav Talwar, Prasad Karkera and Vij Rajnish. Good evening, gentlemen. A warm welcome. Straight away, it's time for Tushar Uchil to step up onto the dais to have a word or two with me. Also, Gopal Butla will be on stage. Tushar, hard luck once again this match not going your way, and the same story continues, and you'll have to reorient your team once again, gather your team. The team owners will have a crucial role to play. We still have that T10 yet to come. Well, this season has not been great for us, especially the fielding department, especially the youngsters. I think it was a bit disappointing letting those balls go away. But all in all, we did manage to give them at the start. I think the first 6, I think we kept it very tight. Did not let the likes of Aryan and Sagar to get away with the innings. Keeping someone, a batsman like Aryan down and not letting him get away at the start is, I think, a good effort from the boys. But all in all, I think the fielding effort was a bit low tonight. We batted well, we bowled well, but I think the fielding was a bit low. Coming to, I think, Team Warriors, I think I will want them to go all the way, not because it's my brother's team. It's because of that one man, Aryan Patni. I think he deserves every bit of it. He's batted like a champion in this entire season, and not just a player. He shows, and he's a total, he's not just a team. Hello. Yeah. Hello. Hello. Every youngster should look up to him, first of all, and he's a complete role model for every youngster who comes on to GSC to play cricket, and with the humility that he has, with so much runs under his back, I think he's a fantastic player. I'm sure that one day we'll see him represent India as well. Phenomenal batsman, phenomenal player, phenomenal role model. I just hope that Warriors make it all the way. Because I don't get to speak to you again in this tournament, one last question. What are the lessons your team has learnt in this journey? Well, first of all, people need to be grounded. When you know that you are a good player, you should take the team through. And the game is above everything else. I think that is what matters. You can play well in 1 or 2 games, but not every game will go for you or will go in your favor. I think that is what the youngsters especially need to understand, because the experienced players know that they've been playing cricket for a long time. I've had a lot of youngsters in my side who've been playing for the first time. Not everyone got a chance this time, but I'm sure that going ahead in the years to come, they'll definitely get a chance, grab the opportunity. Tonight, Mickey played an outstanding innings, bowled well, fielded well. The commitment that he showed, being an owner, I thought he was fantastic. And I think everyone can learn from these things and hopefully grow. Yes, thank you, and wishing you all the very best. It is paramount that a team like Super Kings comes back in form, because that will always spice up any tournament at the GSC. Hello.
Yes, now it's time for the winning team captain to come up and have a word or two with us. It is Aryan Patni, the Superman. Aryan, congratulations. You'll have, at this stage, you're in the top two. But tomorrow night, whether you'll be in the top two remains to be seen. So that's going to be a big question. If gangsters get going, they're in the same scenario as you were tonight. So it's up to how gangsters scores a victory or how they play tomorrow. First of all, thank you so much, Tushar Bhaiya. It means a lot. Coming back to my team, I think we've done what we could have done, what was in our hands. Now, everything else now depends on luck, which we had tonight. And I think to my team, the bowlers, Dharmen Parekh, the way he bowled today, I think even after getting injured in the first over, the spirit he showed, I think it's a learning to all the youngsters. The way he bowled after getting injured and the spirit he showed. Parth and Evan, they have been doing the job continuously for our team, and even Ravi Sahu, the way he's bowling in the death overs. Saket Bhaiya, the way he played, I think it's a whole team effort, and we're playing as a team, and I think if we play as a team, then there's no stopping us. So yeah, that's it. Yes, congratulations, and you'll have to stay back because you are going to be the man of the match award winner as well. And to do, okay, first we give that orange cap. You've got quite a few prizes to be won today. Orange cap, go. Prasad Karkera will hand over the orange cap to Aryan Patni. He scored 435 runs now, 435. It was. Yes, now to do the honors of giving away the purple cap, may I invite Gaurav Talwar to do the honors, and it is Saurabh, purple cap, Saurabh Loya. Okay, because he's not there, I think his sister's going to pick up that cap on his behalf. Saurabh has picked up 11 wickets in his 7 matches at an economy of 7.51. Thank you. And now here's the man of the match award. "58 balls, 89 runs. Well played, well done. And yes, you collect. Yeah, okay. I want to share this award with Baba, the way he bowled. Yes, up comes Baba. Yeah, being handed over a marathon goodie bag. We've got a body first, a gift hamper. We've got a memento on behalf of Goregaon Sports Club. We've got glaze from Gajjar Group. We've got discount vouchers from Zig Sports Studio. And he's sharing the Man of the Match award with Baba. Yes, a good combination of youth and experience. Yes, well done. Thank you. With this, we come to an end tonight. Tomorrow's match, match number 27, Gangsters versus Gladiators. A big thank you. A big thank you to all the viewers for staying connected with us so late in the night. कल मिलते हैं ठीक 6:30 बजे. Take care of yourself. Good night. Shabba khair. God bless you all.